welcome to the Drawing Room Experts. This is Zaib and वापस आ चुके हैं हमारे साथ दोबारा से नेपाल से होके नवेद भाई। कहाँ मौत वाक़ई हो गई थी, नेपाल गए, वापस जिंदा होके आ गया तू जवान होके। बस देख लो, आप दोनों की दुआएं हैं, क्या करें। कहाँ से कहाँ गायब रहता है यार ये? ऐसा क्या क्या मेरे हिस्से का भी काम कर रहा है क्या? ऐसे ही समझ ले। कभी कभार अब तो आप वो तो नहीं है कि तो वाला मीम नहीं है कि कभी कभार मुझे तो लगता है लगता है अपन हाँ? ही प्रेसिडेंट है, तो वाला मीम नहीं होता वो। मैं वो कभी कभी तो मुझे लगता है कि अपन ही प्रेसिडेंट है। अपनी प्रेसिडेंट, हाँ यही चल रहा है, समझ हाँ, ले। और सुना क्या चला? कुछ भी नहीं यार, बस वही काम शाम तो कुछ। आजकल तो क्रिकेट चल रही है, ये डेफिनेटली आजकल थोड़ा जोर पे, ऑलमोस्ट हर मैच पे डिस्कशन हो रहा होता तुम्हारा है वैसे जहन क्या से। है यार? तुम क्या बरसाती फैन हो? क्या है तुम्हारा सीन? नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। तो जैन और मेरा तो आई गेस, मैं और जैन तो ऑलमोस्ट हर मैच को नहीं, डिस्कस करते हैं। बायलैटरल सीरीज ये वो तुम लोग फॉलो करते हो, इस तरह वर्ल्ड हर कप चीज़, वाला चक्कर है? यार नहीं, नहीं, हर चीज़ फ़ॉलो करता हूँ, मगर आजकल ज़ाहिर-सी बात है यहाँ रहते हुए यहाँ रहते हुए क्यूरियोसिटी टाइम मैच नहीं कम होती, हो तो गया है, लेकिन वरना मैं पहले तो मैचेस लाइव स्कोर कार्ड वगैरह देख लेता हूँ। हाँ, वही मगर यार, यानी लाइव कि मैच कुछ देखना। मैं फॉर एग्जांपल जब से वो क्या कहते हैं, पीसीबी ने अपना गेम बिल्कुल वो किया हुआ है ना, स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, उसमें यूट्यूब पे हुँ, वो हुँ। अपने कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस भी दिखा रहे होते हैं, और हाँ, हाँ, हाँ। उनका क्या कहते हैं, उसमें गूगल पे मैंने अलर्ट्स पे डाला हुआ है, तो उसमें हुँ, स्कोर्स आ हुँ। रहे होते हैं डिफरेंट टीम्स के। तो वो भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा होता हूँ कि क्या चल रहा है, यानी कौन हंड्रेड्स हाँ, मार रहा वो है फ़ॉलो फर्स्ट मैंने क्लास। बल्कि हाइलाइट्स देखी थी यूट्यूब पे। आप अभी लोग, जैसे कि मैं अच्छी उसको देख चीज़ ये रहा है था, कि वो डालते हैं ये लोग आजम खान हाइलाइट्स। नहीं है, आजम हाँ, खान मोइन खान का बेटा। हुँ, तो वो अभी वो उसने कोई हंड्रेड हंड्रेड मारी अपनी फर्स्ट फर्स्ट क्लास की, हुँ, हुँ। और क्या कहते हैं, कोई डाइविंग कैच ही पकड़ा था पीछे। मैंने कहा यार बंदा, हालांकि धरती हिला हाँ, देने वाला। वो ना, मुझे वो याद आता है उससे, पता है राणा टूंगा याद है? अबे राणा तुम छोड़ो, मुझे अफगानिस्तान का कीपर मुझे देखा है? मुझे उससे वो याद हाँ, आता है यार। शहजाद। मुझे वो याद आता है सिराज जो लाला। यूएस के बंदे ने जो कैच लिया था अबे वो यूएस अबे नहीं था, हाँ। वर्ल्ड कप में। क्या यूएस नाम अबे नहीं था, था वो यार? था नहीं, नमीबिया ही था वो। नहीं यार, किसी यूएस नहीं टीम था। का डेवरॉक कहाँ का था यार वो? नहीं, 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 वो इंडिया के खिलाफ था। नमीबिया, नमीबिया था वो। रुक जा अच्छा यार, हाँ, डोइन नबीबिया था, हाँ सही कह रहा नमीबिया का कैप्टन था वो, मोटा, है। उसने हाँ, डाइव मार के कैच पकड़ के पूरा उस रोहित शर्मा को राउंड ही आउट मारना किया था शुरू ना हो गया उसने। था ग्राउंड का। पहली मर्द जिंदगी में राउंड मारा था उसने ग्राउंड का। वैसे रोहित शर्मा को आउट किया था ना उसने। डोइन हाँ, लेवरॉक। हाँ, क्या तो कहाँ ये का है क्या वो? होगा, नामीबिया का क्या होगा? डोइन नाम का बरमूडा का है भाई। हाँ, बरमूडा, वही था कुछ, आड़ा टेढ़ा था कुछ। बरमूडा की भी टीम थी, बताओ, शायद ट्रायंगल में गायब हो गई। वापस नहीं आई। वापस नहीं अबे आया। हाँ, पता नहीं कौन कौन सी टीमें थी। हाँ, ये देखो उसकी तो फोटो फोटो पे भी ना, गूगल करते हो तो पहली फोटो वही आती है डाइविंग कैच की। हाँ, शिट याद है मैन, मुझे। बरमूदा को विकेट दी थी रोहित शर्मा ने। हाँ, सो रोहित एम्बैरसिंग शर्मा। मैन। अच्छा खैर, वो हम नॉट टॉकिंग अबाउट बरमूदा और नमीबिया और एनीथिंग। रोहित शर्मा नहीं, रॉबिन उथप्पा। अच्छा हाँ, उथप्पे का हाँ, आउट किया था उथप्पा उसने, था, हाँ। हाँ, उथप्पा, वो भी एक था। उथप्पा भी था, वो भी था एक हाँ, ज़माने में। तो खैर, वो we've gathered here to talk about is बड़ा एक अजीब सा एक सीन चल रहा है। लाइक आई बीन फॉलोइंग इट बट ऑल्सो नॉट टू क्लोजली। ये मैं हुँ, समझता हूँ कि कुछ मैं दो तीन कमेंटेटर्स हैं या क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तानी, यूके बेस्ड पाकिस्तानी। एक है अमेरिक्रिक, एक उसका हैंडल है, आमिर नाम है उसका, I don't know क्या नाम है। और एक और है, इस तरह के दो तीन हैं जो बीबीसी टेस्ट मैच स्पेशल में भी कमेंटेट करते हैं। इस तरह आतिफ के कुछ नवाज हैं। था एक मेन। आतिफ नवाज, यस देयर यू गो, दैट्स अनदर वन। हुँ, तो हुँ। वो मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो वो उसको लाइक वो कर रहे थे, हाइप अप कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे उसके बारे में, और दे वर सपोर्टिंग दिस गाय रफीक, अजीम अजीम रफीक। अजीम अजीम रफीक। हाँ, तो मैंने इतना कुछ खास इस पे नहीं फॉलो किया, बट रिसेंटली अभी अचानक से जब ये माइकल वॉन का भी नाम आ गया, फिर मैंने अभी, आई डोंट नो इफ यू सीन दैट वीडियो ऑफ डैरन गॉफ, तुमने देखी है किसी ने? Nobody कौन-सी? came out in support or something? हाँ हाँ, वो एक शो में बैठ के, अभी 2 दिन पहले की बात है, वो एक He शो में came बैठ out के in वो, support of the players? नहीं नहीं, नहीं, अरे ऑफ अजीम ऑफ अजीम। अजीम, अजीम Oh, रफीक, वो okay. बेसिकली उसका फ्रेंड है, वो उसका फ्रेंड है वो। तो वो बेसिकली वो बता रहा था कि ये सब चीज़ें चल रही हैं। वो भी मेरे ख्याल से लैंकाशायर, सॉरी, यॉर्कशायर से खेलता था, उसका एक्सेंट भी यॉर्कशायर एक्सेंट है। हुँ, हुँ। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो नहीं है जेफरी बॉयकॉट, हाँ, Yep. जेफरी बॉयकॉट टाइप का एक्सेंट है उसका। तो ओके। वो बता रहा था कि ये मेरा, लाइक मैं कीटन उसको बहुत क्रिकेट। अरसे से
अपेरेंटली ये 2000 खैर जैन ने अपेरेंटली इस पे थोड़ा सा रिसर्च करी हुई है, तो विल लीव इट टू दैट, बट वी आर गोना टॉक अबाउट दैट एंड देन ऑब्वियसली अदर थिंग्स दैट कैन नेचुरली फ्लो इनटू अ कन्वर्सेशन, ऑलवेज ओपन, स्पेशली नवेद अगर आया तो बहन क्या हेरा फेरी पे भी बात कर लेंगे, जो भी है, बस ये इस क्योंकि इसका पता नहीं है कि कब दोबारा आएगा, तो कुछ भी बात करके आगे बढ़ने। तो एनीवे जैन, व्हाई डोंट यू गेट अस स्टार्टेड के ये केस था क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सीन क्या है ये? Yeah, I think Kahani it started I think a year ago. And what happened was that Azim Rafiq actually went to the Yorkshire Cricket Board's management and presented them with 47 or 43 charges or instances of racism that When was this? a year ago. A year ago? So I thought 2017, 2018 का नहीं था ये no, सब? I think he did it a year ago. Okay. और फिर उसके बाद हुआ ये कि Incidents पुराने थे. Yeah, incidents तो पुराने थे, but during his time and he was part of Yorkshire रिपोर्ट Cricket किया Club for उसने 10 years, I think. Okay. फिर उन्होंने बोला we launch an investigation. They hired a law firm and everything, right? And हम्म, earlier this year, I think late summer, early fall, they said they concluded the investigation, and out of 43 or 47 instances, they validated 7 of them, saying कि यार उनके आपके खिलाफ जो है रेसिज्म हुआ था, हम माफी मांगते हैं, मगर हम किसी को चार्ज नहीं करेंगे. Right? We're not going to charge anyone. We apologize and all that. And obviously, Yazim and his legal team weren't having any of it. The reason why this blew up हम्म, was that recently, I think a few days ago, ESPN Cricket Info, they got a hold of that report that they weren't going to publish, and then they published most of it essentially. I think Okay. George Dobell, I think, is one of the main guys at Cricket Info. He was instrumental behind it. Basically, there was it just shows that the organization has a strong culture of institutional racism, they're calling it. There was times a lot of players used to refer him as Paki, which is almost very specific it's written as a slang slur up against there, yeah. Pakistanis, right? that's Uh, racist. yeah, that's it. Yeah, so it was, the thing is they failed to distinguish that as being something that's racist. Even the report said they meant it as a banter or a form of banter or something. But the interesting thing in the report, in the allegation, is okay, once Azim Rafiq called someone of Zimbabwean descent Zimbo, right? Zimbo, Uh-huh. as in you can call someone Kiwi or Aussie, Right. and he was charged or reprimanded by the management for that as being What? acceptable or racially charged or inappropriate. So he was charged. He was charged for that. He was Azim. reprimanded or charged. I, it's unclear कि इसके खिलाफ हुआ क्या action लिया गया क्या, मगर they Like did action approach हुआ था, disciplinary action हुआ था. कोई disciplinary action उसके खिलाफ हुआ था, which is again अगर आप if you're so lax about banter, then Zimbo is nothing compared to something that's racially motivated such as Paki, right? Right. अच्छा, एक चीज यहाँ पर पॉज करना, तो ये जो हो रहा था, like इस Hmm. was this as a result of his initial complaint, जिसमें ये भी निकला कि जिम्बो बोला उसने किसी को, or was this a separate case? No, it got. I think what happened was he said that as a comparison of what the culture is in the club. He said कि भाई जब मैंने ये किया तो उन लोगों ने तो मेरे खिलाफ ये कर दिया, Oh, और okay, जब okay. मैं So this was a माफी previous, जब कह रहा था उनसे कि previous भाई मुझे precedent था फाकी ये. मुझे कह रहे हैं, they're like it's just banter, bro. So मैं करूँ तो कैरेक्टर डील and है. हाँ, तो हाँ, exactly. तो फिर इसमें ही क्या कहते हैं कि माइकल वॉन साहब जो है, he got dragged in. Apparently there were going to be more people, but उसमें and I think you guys know this as well. Okay, he was I think in a team huddle and there were a lot of people of South Asian descent in that huddle, like Rana Naveed and Ajmal, couple of English players or who Adil are Rashid, Adil Rashid. obviously Azim as well. And he said, there's too much of you, Lord, and we got to do something about it. हाँ, So initially, obviously, Michael one denied it, कि भाई मैंने कभी नहीं कहा. And then Rana Naveed off the top rope confirmed. that slams on top of Michael one and says, what you said, I was there, bro.
And he said कि भाई बाकी जो लोग थे उनकी ECB के साथ jobs हैं या वो खेल रहे हैं मैं इंग्लैंड में, so मैं they're था not मैं था interested. मैंने देखा था, मैंने मैंने देखा देखा था, मैंने देखा था, like खुली छाती से बोला. वो So इतना रेलेवेंट हुआ होता है इस वक्त के नहीं बोल में नाम तो आएगा कम से कम था बेचारा। बोल तो that's दिया his most relevant moment since that fielding slip up. वो तो बेस्ट था Oh my god. फील्डिंग कौन सी? Yeah, that's just a priceless. इंग्लैंड में England मैच था वो देखना वो क्लिप वो बेचारा डाइव मार के रोकने की कोशिश कर रहा था बॉल को फिर? अपने they पाँव slip से दो it was दफा just बॉल को मारा अच्छा शायद मैंने कम देखा वही है, आई थिंक आई हैव सीन दैट। जबरदस्त फील्डिंग वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग that and then वीडियोस Dark रहते area हैं slide and throw. हाँ Anyways, वो कनेरिया और वो तो बेस्ट था ना anyways, और एक वो yeah, अजमल का that's it. कैच The issue is, yeah, that's the issue in broad strokes, but it's highlighting a lot of, and it's the number one like sporting issue in Britain right now. Of ओ या, when the डेफिनेटली। MPs got involved, uh, Boris Johnson, weighed in, and and they're losing sponsors as well. Yorkshire Cricket Club. यॉर्कशायर। Yeah, they are. तो I think क्लब को तो Nike. बंद ही कर दिया राइट हाँ, I think उनका president या जो भी chief है, he resigned. अच्छा स्टेप England डाउन cricket said we're not gonna play any home games there. हम्म Nike dropped them. Uh, but it's funny that Nike dropped them, who run sweatshops around the world. But that's neither here nor there. But हाँ। yeah, it's a bad look for them right now. हम्म But I mean, I hope it gets the whole thing is released and that guy gets his day in court or whatever. But या it's not a good look, man. अच्छा वैसे मैंने भी जो the interview slash statement that I was referring to earlier of Mhm. Darren Goff, um, उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि this is something that he's been like fighting for a long time, as if like he's been trying to prove that he's right for a long time, but nobody was listening to him. During this time, also Azim Rafiq, I think very important to note, him and his wife had a stillbirth, Mm. so he lost a child as well. So he was fighting a lot of like mental issues because of that, and then on top of that, this racist organization, apparently the culture that was surrounding him. Darren Goff said that I have lost a couple of my very close friends to suicide in the past 12 months. He said that ओह नो I've been in touch with Azim, especially because that he has had suicidal inclinations. तो जो Or जो दोस्त थे दे यूज्ड टू प्ले no, he said नो नो one of them was his best friend, oh sorry, best man in ओके his ओके ओके wedding. तो वो basically बता रहा था कि I am more sensitive to this now because I've हम्म lost two people. And then उसके बाद वो कह रहा था कि I've known Azim for a long time. He's a mate of mine, but I've ramped up my communication with him, not as like a cricketer, but just to say, hey, how's it going? Like, how are you doing? Just so that he has a window where he can, communicate with him and not leave him या by himself. So apparently Azim was going through a a lot lot here. And Yeah, um that's true. He was going through a lot of depression because of that as well, because of that bullying, and I think he spoke about suicidal thought. But just to go back and clarify my comment on that Zimbo issue, uh, it actually the way it went was, okay, and I'm reading this report, was the club went on to declare that the context of the comments that he was referring to the Paki wale comments. They said they were simply banter between friends, and Rafiq should take such comments in the spirit that they were intended. But the panel instead went on to levy charges against Rafiq, claiming that he had called a player of Zimbabwean heritage Zimbo. तो उन्होंने बोला कि भाई ये बाकी बाकी तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, तो पता नहीं फालतू में तुम क्या कहते हो ऑफेंड हो रहे हो, मगर ये तुम्हें जिम्बो नहीं कहना चाहिए था, तो हम इस पे आपको चार्ज कर रहे हैं. This is this. wow. So This बाकी is, बाकी I बाकी mean, चलता है वो जिम्बो मत भाई बोलना जिम्बो नहीं है, सही है यार, जिम्बो क्यों कह रहे हो? So अच्छा मैंने पहली दफा लेकिन जिम्बो सुना है वैसे कभी मैंने मैंने well, सुना भी मुझे नहीं भी नहीं पता जिम्बो था. I didn't even know that was a slur. But या I don't think it's a slur, but I think as Zen it's said, like कि a like I said, Aussie, or whatever. हाँ किसी को Aussie बोलती है, but लेकिन वो because he's from an African descent, तो वो obviously is उसका एक context different हो जाता है कि यार, maybe this was meant as a, but this is ridiculous. um what's this issue with Michael Vaughan?
because I think he came out with an article like The Telegram. proactively saying that I am named in the report, but I didn't do anything I to But he violate the category law. denied it. deny, never said He anything. अब denied इसके it. बाद ये फिर आन नवीद आया कि भाई क्या हो गया? मैं भी था And वहां पर, लेकिन वो लेकिन वो अच्छा वो वाला सीन होगा। नहीं नहीं, आपने बोला था और आपने ये बोला भी था। कहा था कि इसको बिठा के गधे पे पूरे मालिक भूल गए, टेंशन बहुत है ना। आजकल तो वर्ल्ड उसके कप बाद चल रहा है ना, BBC उसमें डिसाइडेड टेंशन कि भाई बहुत है आपको यार। टेंशन बहुत हो रही है तो अभी शो से कट लो अपने. So he's वो off बंडल his बन like गया। weekly BBC show as well. वर्ल्ड But कप का जो वो कर रहा है ना, बट yeah, दैट्स द whatever थिंग। it is. अच्छा, माइकल वॉन, आई डिडंट नो दिस, हुँ। he enjoys a lot of a bad reputation. हाँ, ये Not कंट्रोवर्सीज़ enjoys, में probably रहता है। probably बहुत Apparently probably he ज़्यादा। said the some wrong word like racy stuff in the past, you know. या in the past. So अच्छा बताऊं क्या हो रहा है, and not just like Pakistani journalists or हुँ, Pakistani British journalists or cricketers or people from that background are piling on and saying that, oh, what a surprise. It's like they're treating it as if someone said Donald Trump is a racist. तब कहेंगे, oh, Mm. really, what a हाँ, surprise, right? तो वो हुँ, भी कह रहे हैं, oh, what a surprise Right. that Michael Vaughan is a racist. And not just them. I've seen a lot of Indian journalists who are like pretty neutral, and they report on both things. They're हुँ, coming out because apparently he had a spat with like Wasim Jafar. Like they've हुँ, had some Apparently issues over he was too Twitter. critical of Moeen Ali relative to the rest. There's a lot of Yeah. I think there was, what's that tweet that's going around where he said that someone asked him that, does this mean that Moin should go around, explaining, or every Muslim in the country in the UK, that terrorism is wrong, something like that. No, हुँ, जिस पे वो tweet respond करता है Michael Owen saying कि unfortunately, uh, in times like this, yes, he has to do this. Like, so he's saying, he's pushing this narrative where like Moin Ali, for example, being from a Muslim descent, like Muslim yeah, to background, take ownership of every action and take by every ownership thought who every action, was exactly like him every or rest it, yeah. especially when he's like, he's got a beard and everything, he's a practicing Muslim, and हुँ। also Adil Rashid. So what's his deal with that? I mean, have you guys known something about Michael No, Vaughan like not previously? really, no. No, not I not was like never. racially नहीं, मगर ये देखा है कि हमेशा ट्विटर पे he always has something to say that kind of creates a controversy somehow. हाँ, कुछ वो कुछ चलता हमेशा रहता है कुछ उसका, अलग ही चीज़ इंडिया के लेकर साथ आता चलता है, वो रहता है, एंगल। या Yeah, दैट्स अभी तो इंडिया के उसकी साथ वो भी चल रहा था अभी तो उसका। लोग उसके उस पे ले रहे थे कि congratulations Babar Adam and all that, and आदम पे, हाँ हाँ। people making fun of that. But yeah, nothing really that sticks out from memory. एंड कि यार इसकी लाइक थोड़ी इवन सी अंडर हिज कैप्टेंसी, reputation. Yeah. वो पनेसर जो था, मॉन्टी पनेसर, एंड आपका क्या नाम था दूसरा जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था जो शुरू से कराची में खेला है, कौन? अच्छा, वो अवेश Oh, शाह। अवेश Oasia. शाह। Oasia भी था. नहीं अवेशा हाँ, नहीं, तो एक और पाकिस्तान के था। खिलाफ ही खेलता था. जो इंडियन है, क्या नाम है यार उसका? क्या? अवेश शाह? नहीं एक मार्कराम और था ना, अभी प्रकाश। आईपीएल अपना पीएसएल में खेलता रहता है। Oh, I know what you're talking about. I know what you're क्या talking about. अच्छा, वो अ, नाम याद नहीं आ रहा उसका। मुझे याद आ गया, Sumit? आर से है ना Sumit? समथिंग। हाँ, आर से अमित है। पटेल? नहीं, हाँ? नहीं, दूसरा यार जो कराची से भी खेला है, कराची से भी जो खेला रॉब है ना, रॉब नहीं, क्या नाम है यार उसका? उसका नाम है नाम याद नहीं आ रहा यार, मक्खन खा कौन है वो? वो तेरे डोरी कर दो. क्या टिल्ली बप, मतलब? टोकू बंद। नहीं, रवि बोपारा। रवि रवि बोपारा, यस। रवि बोपारा. हाँ. ये और आई थिंक पनेसर वगैरह ये सब तो वॉन की कैप्टेंसी के अंदर थे ना, टीम में? आई थिंक One, सो। yes. And then या I think आई थिंक, mostly Strauss फिर उसके बाद. नहीं आई थिंक वो 2005 वाली जो आईसीसी थी ये लोग जीते थे, उसके बाद 7 वाली जो थी उसमें आई थिंक पनेसर था। मगर फिर 5 के बाद रिटायर नहीं हो गया था one like 2006 or 7. नहीं, I think he played until 9. या 9 तक उसके उसके बाद वाली खेली थी उसने, आई थिंक उसमें भी रहे हैं ये लोग। सो आई एम लाइक, हैज एनी ऑफ दोस गाइस स्पोकन अप रिगार्डिंग दिस, यू नो, No, I mean, बिकॉज़ they might they were know in the team, I they think। might अच्छा, get वो any question and might हाँ, know. नहीं, हुँ, वो उसने बोला ना, क्या कहते हैं, राणे ने बोला है कि राणा these साहब। guys will not, they will not come out because understandably, for example, Adil हुँ, Rashid is playing for England right now, so he's not हुँ, gonna go up and create a mess, especially like he's in the middle of a World Cup. Maybe, I don't know. So खैर ये चीज़। वो थोड़ा उसको benefit of the doubt देता है. कुछ लोग अभी play like they're playing county cricket. Others are either working for a Yeah, county Rana's like, I organization. have nothing to lose, man. I'm gonna हाँ, तो shoot from Arana was there. like, fuck this, man. Like, ये तो उसकी लूज़।
अच्छा ये, ओह फकिंग हेल, अभी मैं सिर्फ ट्वीट्स देख रहा हूँ, सब हाँ लोग जो है ना उसकी पुरानी रिसीट्स निकाल के लेके आ रहे हैं माइकल वॉन की ट्वीट्स की ना। हाँ, उसने ये ट्वीट थी तो कि नो लंदन में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, लगता दूसरी ज़बान सीखनी ओह पड़ेगी। ये, ओह या अभी वही देख रहा था, अभी वही या देख आई रहा नो। था। नॉट मैनी इंग्लिश पीपल लिव इन लंदन, आई नीड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। फक मी। ये यार ये ये हमारा ये हमारा भी ये तो एक ये ये वो बंदा चल रहा आया है था यार ना ये। रेशल उसमें राइफल। सरफराज था ना। सर सैफी आया था, कल्ला बोला था उसने, बोले उसने काले। सीधा सीधा खुद माइक पे खड़ा होके बोल रहा उसने है। बोला था, हाँ एग्जैक्टली, हाँ माइक पे खड़ा होकर बोल रहा है। तो स्टम माइक पे आया था पूरा। बट दैट्स द थिंग, लाइक बात वही है, करता हटता कोई है, दिखाता कोई नहीं है। नहीं हर नहीं, कुछ कर रहा, वैसे करते सब है साले, मगर दैट्स द थिंग, लाइक व्हेन इट कम्स आउट देन एवरीवन जंप्स ऑन द बैंडवैगन, वरना सब जो I भी think even if it was अगर कोई banter में कर रहा था, I it's possible, कि banter में हो रहा था, but if they're या seeing that this is having such a horrible effect on that guy, he's हाँ not फिर taking देन it, ऑफ तो कोर्स ऑफ कोर्स। क्यों आप करे जा रहे हैं? oh, and then actually Gary Balance, who's the English Balance, हाँ. cricketer, he came out like yesterday or something like that, where he admitted कि हाँ, I was the guy who called him I Paki was and one of them, yeah, yeah. I was one of And them and he I'm was again saying कि भाई uncomfortable. banter था, दोस्ती यारी में चल रही थी ये बातें, मगर if But he the has guy is working apologized. so much, yeah, he did apologize, but he said मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं इसको racially abuse करूँ and ठीक है, all that. some of it is education. I I understand that. आई कि थिंक यार एक और it's not a चीज़ है, अब लोग भी crime. तो बहुत सेंसिटिव हो गए ना उस मामले में, पहले ये सब चीज़ें उतनी नहीं होती थी, अब तो आप कुछ भी बोलो Like, I किसी भी अच्छा mean, चीज़ ये पे। मैं इस पे बात like, करते हैं, इस पे वैसे बात करते हैं, मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा इसमें। हुँ, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाके, बट वन थिंग आई वांटेड टू आल्सो टच अपॉन इज द गैरी बैलेंस थिंग, जिसमें वो कह रहा है कि अच्छा, बहुत से a lot of people are pissed off at him and throwing obscenities towards him, which is understandable because obviously उसने basically target up उड़ता ले ली ना उसने अपनी तरफ, he's basically called हुँ, up कि हाँ भाई I हुँ, but was the guy। but he owned पहले तो it नहीं though. पता, I mean, which he I'm owed it, he owned yeah. it, but there's a difference as well कि I don't know, maybe like this is insensitive of me to say, but there's a difference between um an employee being racist to you, right? For example, हुँ, अगर मैं किसी organization में काम कर रहा हूँ, मेरा एक colleague is being, giving me racist slurs, whatever, versus the full organization itself, जो कि जिसके अंडर में काम कर रहा हूँ, तो who हुँ, owns हुँ, me, my time, my work, who basically can mold my career and basically can destroy my career, right? हुँ, So Yeah. it's not the same. It's not like Yorkshire is equal to Gary Balance. I think the cover up is worse than what actually Cover up is happened the problem. because they're हुँ, हाँ. saying कि, हुँ, हाँ कहा था मगर यार ये तो वेंटर था, कोई ऐसी बड़ी बड़ा एंड इशू देन ऑन नहीं है। टॉप ऑफ दैट वो कह रहे हो बाय द वे, वो जो अच्छा ये तो हाँ, ऐसे ही है कि रंगो ना लगा कि या यार मुझे, यार आपको पैसे देने थे मुझे 2 लाख रुपए, वो कहाँ है यार, वो पैसे तो नहीं है एक्चुअली, वो तुम्हारा पैसे शायद मैं कभी दे भी नहीं सकूंगा क्योंकि मेरे पैसे नहीं। ओ बाय द वे, मैंने तुम्हें जो 20 रुपए दिए थे वो वापस कर रहे हो या नहीं? तो वो लाइक दे डबल डाउन कर रहे हैं ऊपर से आके कि नहीं बाय द वे, तुमने भी तो बोला था जिम्बो वम्बो उसको, अब जरा। I think it was a tactic to say कि भाई तुमने भी कहा था, तो वो बोलेगा यार अच्छा हाँ मैंने भी कहा था, तो he'll just sort हाँ, of हाँ, सही withdraw मतलब सही, ये his तो फिसल जाओ। चलता रहता है और क्या, दैट्स हाँ समथिंग लाइक दैट, या But तो I think, I mean, if you think about, like, for example, Dean Jones, right? His career हुँ, was derailed at least for a while. Jab या he got caught on mic saying, the terrorist gets another टेररिस्ट terrorist, हाँ, terrorist gets फ्रॉम दिस another कंट्री। wicket. but it was off air actually, he was off air and he was saying it, Yeah, he got caught on a hot mic basically, right? हुँ, हुँ, Between the the breaks, overs over Oniki break. It was या Amla, right? हाँ, हुँ, So, but I think he did not commentate on a mainstream channel. Uske baad. He got coaching never। gigs, I think, but I don't think any उसके बाद mainstream सीधा वो channel. पीएसएल का कोच बना था, मतलब आप आ जाओ, हमें कोई मसला नहीं है। नहीं, आप मुझे आ मुझे जाओ। वैसे ऑनेस्टली बताऊँ क्या, मुझे मुझे उस वक़्त देखो डीन जोन्स उससे पहले लाइक बिफोर दिस टेररिस्ट किक ही वाज़ प्रोबब्ली द माय फेवरेट कमेंटेटर। या लाइक मुझे या ज़ैन को पता होगा कि मी एंड ज़ैन I यूज्ड enjoyed टू him a लव lot. लव लिसनिंग टू हुँ, उसका ही वाज़ बैंटर ऑन डेफिनिटली वन ऑन ऑफ द द बेस्ट। कैमरा, सॉरी ऑन द माइक, ही वाज़ अमेजिंग लाइक Good. वो कौन था वो यार, इंग्लिश इंग्लिश रेफरी, वो सॉरी इंग्लिश अंपायर था, मोटा-सा, Shepherd, अ, David Shepherd. पीटर पार्कर था ना उसका नाम, उसको वो कहता था पोर्की पार्कर, पोर्की पार्कर कहता था क्योंकि मोटा-सा था वो। तो समथिंग लाइक दैट, लाइक ही इज़ ऑलवेज़ लाइक या थोड़ा-सा बैंटरी और I थोड़ा-सा think आउट ऑफ, honest part was like he was trying to be like funny, but it was like kind of या because इट वाज़ अ I बैड think जोक, I इट think वाज़ he अ इट yeah, it वाज़ was अ a वेरी बैड horrible जोक। joke, but he was like generally supportive of
people of color, and then Pakistanian ke saath he was Hmm. always a great Oh relationship, yeah. which is Like why PSL, he was Yeah. PSL and invited to the PSL. Islamabad United owe a lot to him. Like Yeah, yeah. Islamabad United is Like probably even right probably now नहीं वो definitely. जो अभी पैनल बैठता है ए स्पोर्ट्स पे, इवन राइट नाउ हाँ, वसीम अकरम yeah एंड yeah एवरीवन दे जस्ट कीप bringing up Dean Jones praising every him. now and then when they were talking about Asif Ali and Oh yeah everyone, and yeah. they Dean Jones was a हाँ, favorite in Pakistan. Like अगर वो yeah, जिंदा होता अभी तो he would have definitely been the coach. Like he yeah, would have for been sure, definitely in yeah, contention to be the He would have been up coach there, of yeah. Pakistan cricket. yeah, yeah. Definitely, and he was actually like when Misbah was appointed. उससे पहले जब Hmm. बात चल रही थी, तो he was in contention. But I think उसको consider इसलिए नहीं किया गया क्योंकि as we know now, organized PCB was moving towards like कि local coaches चाहिए हमें. But Hmm. anyway, um, uh, अच्छा एक going back to Michael Vaughan, मेरा एक समझ लो कि that statement which is now confirmed by Rana Naveed कि Hmm. इसने बोला था there's a lot there are a lot of you guys something करके ना We have to do something about it. Yeah. हाँ like Hmm. it, it wasn't a threat, right? He wasn't like saying अब मुझे No, कुछ I, करना I पड़ेगा I तुम्हें think पर it's one of those things people make, like one of the jokes people make, but don't understand how poor, in what poor taste it is said. I think they Hmm. just it's yeah just lack of self-awareness, lack of education, and I just think it's speaking from that. more than that more than Yeah, that I but think it's उसका जो CV बनी हुई है ना hmm, उस वजह से ये ज्यादा हिट करा है अगर if it was like right, Dean Jones for example, like Dean right. Jones की हमने बात करी भी if Hmm. Dean Jones की वो एक पैटर्न दिख रहा होता ना कि अबे साला ये कोई अगर इंडियन बॉलर होता है या पाकिस्तानी बॉलर या बैट्समैन होता है उसको ज्यादा प्रेज नहीं करता चढ़ाता नहीं अपने लोगों को ज्यादा Hmm. सपोर्ट करता है But और फिर but उसके do you बाद वो think he टेररिस्ट was कहता है trying to say कि भाई इन लोगों को report कर देना चाहिए? I don't think so. That I don't आई think डोंट that थिंक सो either. Yeah, yeah. और आई डोंट But थिंक एज वेल कि ही वाज प्रोबेबली सजेस्टिंग कि अब एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि सिर्फ गोरे बच्चे आए हैं पढ़ने यहाँ पर खेलने Hmm. I think he just which he just didn't know that his words, or maybe he was too arrogant to even understand how harmful his words were, right? Because they were yes and causing then harm. and I'm And sure कि at the time राना नवीद हंसा होगा उस पे क्या बात करी क्या हो गया? बॉस ने क्या जोक मारा है लेकिन लेकिन If he got it. या Hmm. हाँ अब पता नहीं यार ऐसा तो नहीं करो यार बेचारा वो काउंटी खेला है लाइक इंग्लिश आती है उसने हल्का लिया हुआ तुमने राना नवीद को उसकी वीडियो भी चल रही है राना नवीद ने यॉर्कर मारी और मिडिल स्टंप उखाड़ी थी माइकल वॉन की देखी है उन्होंने हाँ, वो अच्छा उसका ये पाकिस्तान था में कि वो 9 ओवर पिटता था 7-8 रन पर ओवर या पे, और लेकिन फिर एक यॉर्कर मार के बोल्ड करके निकल जाता था। और नहीं उसने लेकिन वो उससे एक आउटस्विंग भी जमाने मारता में था कभी कभी यार, चिकनी पर्पल आउटस्विंग। पैच था उसका एक जमाने में उसका पर्पल पैच चल रहा था वैसे ही वाज हाँ, रियली अबे गुड भाई नहीं, वो पता नहीं he हर जगह had his खेल रहा था, time। बिग बैश में विकेट उड़ा रहा था, छक्के भी मार रहा हाँ था इधर उधर। पीछे वो एंड वो एक ज़माना था जब वो और शब्बीर अहमद हमारे अटैक बॉलर थे। that पता is a नहीं था पीछे वो lean period for पाकिस्तान। और फिर उसने जूरा लेके आया था अरशद खान। हाँ, और ऊपर से फिर पाकिस्तानी आधी से ज़्यादा टीम वो एक ही हेयर सैलून पे जा रही थी, सबने बाल डाई करवाए थे। मोहम्मद शमी वो लाल बाल लेके, अफरीदी गोल्डन बाल लेके, याद है? जब हाँ पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ चल रही थी। इट वाज़ या अबे मतलब यार ये कुत्ते की तरह पीटता था उसको सहवाग। इतना धोता था राना नवीद को, इतना धोता था। एंड लेकिन देन वो देखिए तो मैं वही बोल रहा था कि अभी जो माइकल वॉन के जो अगेंस्ट जा रही ना चीज आई थिंक दैट्स his track record is probably going against him more than हाँ हुँ, वो तो हुँ। what he या said um but आई I थिंक think यही जो ट्वीट्स हैं उसकी उसी वजह से, राइट? बिकॉज़ पीपल न्यू कि हाँ भाई ये बातें ऐसे ही करता है like पागलपने ऐसा की, चल बट रहा नो है वन कि वाज़ सरप्राइज्ड। ऐसा लग रहा है कि पागलपना नहीं है कि कोई इनोसेंट बातें नहीं है लाइक इधर हाँ, प्रॉपर लाइक रेसिस्ट माइंडसेट दिखा रही या है लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा होता है कि माइकल वॉन ना लाइक he's dying to say the n word लेकिन वो कहीं ना कहीं से ना अपने वो फेटिश निकाल रहा है थोड़ा बहुत बातें करके तुम लोगों को बाहर निकाल दूंगा ब्राउन ये वो करके ना लेकिन वो अगर उसको लेकिन वो किसी अकेले के मन में जाता होगा देखता होगा कुछ नहीं दिख रहा वो चिल्ला के बोलता होगा "गा!" I, तो I think he comes across it स्नूप I डॉग think the के fact गाने। that he's like completely disavowing कि भाई मैंने कहा ही नहीं था, that's my अच्छा issue। कि भाई उसने चलो तो एल पे माफ रख कर दे दिया यार, मैं 10 साल पहले मुझे उसने एजुकेशन नहीं थी, फिर यार गलती हो गई, माफ कर दो, whatever, I'm हुँ, उसने तो willing to सीधा सीधा drink। एल पे मारा है उसने तो सीधा सीधा एल पे मारा उसने बोला पौंका मैं एडमिट करने वाला हूँ तुम ज़ैनी लोगों हो को गया कि उखाड़ना है उखाड़ा मैंने तो ये किया नहीं, मैंने तो दबाया नहीं था। मैंने तो किया नहीं है ये क्या भाई कर ठीक लोगे है। ही सेट चलेगा ये ना तो मेरा जुड़वा भाई सेट है, होगा ये तो मेरा जुड़वा भाई है, he will be like that, ये तो जुड़वा भाई था मेरा। वाइकल मॉन
वाइकल Michael. मॉन था वो। वाइकल मॉन था वो। नहीं, माइकल Michael वो Mon. हाँ, तो वो खैर मुझे नहीं लगता कि ये उस कहीं तक इस तरफ जाएगी, बट आई थिंक ही इज कॉट इन प्रेडिकेमेंट। जिस तरह मी टू मूवमेंट में नहीं ऐसा होता कि कुछ लोग Right. एडमिट करके फंस जाते थे, कुछ लोग एडमिट ना करके फंसते थे। तो वो एक बैलेंस स्ट्राइक करना, आई डोंट नो हु केम आउट ऑफ दैट मी टू मूवमेंट वेयर दे स्ट्रक अ बैलेंस एंड दे रिकवर्ड। आई डोंट थिंक नोबडी डिड। जॉनी डेप लाइक इफ यू थिंक Johnny Depp ने तो जॉनी tables turn कर दी because but that was he more turned like out to a be he turned out to be द the person who was getting abused actually. उसका जो abuse, yeah, पूरी it turned the other way opposite हाँ, around. program हो Yeah. गया नहीं वो तो उसका. खैर हाँ, वो तो झूठ पकड़ा गया उसकी फियांसे uh, अभी भी कौन थी uh, वो। लेकिन Yeah. लेकिन nobody came, like nobody Like knows no the one has actually best। repaired his reputation from that. I नहीं think नहीं not that I. कौन है, like maybe Ben Affleck, right? Ben Affleck को भी तो फंसा था Benefit वो का एक हुआ जमाने था में। कुछ क्या? कुछ कहा था ना I don't उसने, वो जो remember. एक वीडियो आई थी उसकी कि एक रिपोर्टर थी उसके वो साथ थोड़ा सा केसी वो, एफ्लेक था, आई थिंक दैट वाज केसी, उसका भाई सॉरी, था। जो ऑस्कर और विनर भाई, I think वो हाँ जेम्स उसका फ्रैंको भाई के है, साथ भी कुछ हुआ था. जेम्स केसी फ्रैंको के एफ्लेक साथ के ऊपर आया था। जेम्स फ्रैंको के साथ हुआ था। हाँ, फ्रैंको जेम्स के फ्रैंको आई साथ तो थिंक। कैंसिल कर दिया ना उसको, नो वंस वर्किंग विद हिम एनीमोर। is he cancelled? I haven't seen anything लाइक from him. उसका जो जिगरी था सेथ रोगन, ही क्लियरली केम आउट एंड सेड आई एम नॉट गोना एसोसिएट विद हिम एट ऑल। तो अच्छा, वो He उसने ही said बोला I'm है? not going to रिकवर। associate with him. या या रियली? हम्म। वाओ, तो वाओ। दैट्स लाइक, या, तो इवन ही That's उसका भाई तो डिड। काम interesting. कर रहा है, आई थिंक उसका भाई तो काम कर रहा है, आई थिंक। केसी एफ्लेक काम कर रहा है, बट अगेन अबे आफ्टर उसका भाई, उसका क्या नाम है, फ्रैंको का, हाँ नहीं फ्रैंको का तो हाँ, कर रहा है, या डेव फ्रैंको, पता नहीं कौन है डेव वो। फ्रैंको, हाँ डेव 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 इज स्टिल हाँ, वर्किंग। मगर आई गेस वो जो पूरी उनकी वो थी ना टीम जो थी, दिस इज द एंड वाले ये सब जो थे, दे ऑल केम अंडर फायर। मगर आई गेस मेन जो रहा तो वो वैसे क्या है, जेम्स वैसे मैं फ्रैंको। सोच रहा हूँ, लाइक अब लाइक इफ ईदर ऑफ यू वर, गॉड फॉरबिड, माइकल वॉन इन दिस केस, हम्म एंड लेट्स से यू मेड लाइक चलो यही इसको पाकी तो नहीं कहेंगे, एटलीस्ट इस जोक को हम एक हम्म जोक क्या है, स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को पाकी लेवल या एन वर्ड के लेवल तक तो लेके नहीं जाएंगे उसको, हम्म लेकिन Right. इस तरह का कोई स्टेटमेंट बोला होता तो व्हाट्स योर, बिकॉज जो जो क्योंकि जो जो बंदा अपनी देख रहा होता है ना कि इसमें इसमें सबसे बड़ा लॉस क्या होता है, एक तो होता है स्पॉन्सर्स का लॉस, या हम्म आप काम कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजिंग साथ, उनके Job साथ is आप the वो biggest one. कट Yeah, जाओगे। exactly. दूसरा होता है कि आपकी रेपुटेशन का लॉस, कि आपके साथ आगे कोई काम नहीं करेगा। आई थिंक मे बी डीन जोन्स प्रॉब्ली सक्सेसफुली केम आउट ऑफ समथिंग व्हिच वाज या क्वाइट यू कुड डॉजी। से, हाँ yeah. हाँ, बिकॉज़ ही वाज नॉट जस्ट वर्किंग हियर, ही वाज वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया एज़ वेल। ही वाज वर्किंग लाइक Yeah, but आईपीएल, I think आईपीएल में था यार वो, but तो I ओह या, think ही उस वाज वर्किंग time आईपीएल। इतना हाँ, देयर नहीं यू था, गो। मतलब yeah, the environment wasn't as charged लेकिन as it उसने is जो बात now. बोली थी वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से भी, उस वक़्त के ज़माने So में it जब was उस not आई इतना वाज, good. वोकनेस नहीं थी, आई थिंक उस दैट वक़्त वाज भी उसको बिगर देन But आउटक्राई। I think for the next few years or a year, he हाँ, was सोचो kind माइकल of वॉन बोलता कि माइकल वॉन हाँ बोलता मोइन अली आउट करने के बाद कि द टेररिस्ट पिक अप नहीं, अनदर विकेट, तो गया माइकल था। वॉन ने तो उसके मुकाबले में कोई ऐसी चीज कही नहीं. I mean, if you look at it हम्म on that scale, I दैट्स mean, व्हाट आई एम या सेइंग। तो yeah. मे बी वो जो तो क्वेश्चन था मेरा कि हु इज रिकवर्ड फ्रॉम इट, इज प्रॉब्ली डीन जोन्स, ही इज रिकवर्ड फ्रॉम I इट think बिकॉज़ ही Michael इज। Moore will come out of it. बट It's हाउ not शुड like वन, लाइक मेरा it's not क्वेश्चन तुम लोगों से racial. ये था कि, मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये था कि हाउ हाउ वुड यू डील विद दिस पीआर fiasco, like PR mess? If you were his PR manager, what would you advise him to do? Like come Might out be clean, upfront, apologize, and refer say to I'll refer meet to with. education, I'm gonna go and go through like a full program, like what's his name, जो भी इंग्लैंड का नया बॉलर था अभी जिसकी पुरानी ट्वीट्स पकड़ी गई थी, उसको तो निकाल दिया था यार फिर. उसको हाँ, तो ही वाज निकाल दिया सस्पेंड था. बट केम बैक, ही प्लेड अगेंस्ट इंडिया, ही प्लेज अगेंस्ट इंडिया, जब इंडिया की सीरीज होती है टेस्ट सीरीज, उसको एक टेस्ट के लिए सस्पेंड किया गया था। ही मेड अ डेब्यू, देन उसकी पुरानी ट्वीट्स आ गई थी जिसमें हम्म I think he didn't like do Paki Waki, but he made some like homophobic statements or whatever, something like that. हम्म लेकिन वो 14 साल की ट्वीट थी, like 14 साल का बच्चा ट्वीट कर रहा है, but yet he was suspended for a match or two or something like that. Then फिर इंडिया की जब सीरीज हुई थी, he came back. वो पूरा एक ECB ने उसको एजुकेशन प्रोग्राम से गुजारा था कि ट्रेनिंग प्रोग्राम हुई थी उसकी टू बी मोर हम्म अवेयर एंड पॉलिटिकली करेक्ट, I ब्ला mean, ब्ला ब्ला। he should own it and say I'm trying to work on improving या myself because मुझे नहीं पता था. I said it in uh, without knowing what my words truly meant, and I should really do better, basically, especially being हम्म ex-captain of the England team,
seen as a Right. senior figure, whatever, right? And I mean, it's not like he should be locked away or something, right? He Yeah. shouldn't be like banished from society for Should it. he But be should he be cancelled? no, I mean, I don't think I so. mean, Yeah. if he shows the fact They that should, there's a Dean Jones, he showed with his actions that yeah, he's do not a something racist. that cancel out your actions or try to. I mean, obviously, try to get things right Like, with people that you've offended first, right? Because they yeah, have yeah, yeah. more of a right to decide about how you should carry on as opposed to Like, just do a town Mm. hall in Birmingham or yeah, in wherever South Hall. the South Hall, wherever, right? जहाँ Yeah. पर इनकी immigrants की population ज़्यादा है. Do a town hall Mm. करेंगे. I'm gonna go there. You guys come in. You wanna give me tough questions. You wanna throw, like, I just wanna sit with you guys and learn, Yeah. something like that, right? Yeah. yeah, It could be a great publicity stunt, as Mm. well as also, like, if he's genuine, he could come out of this like a very strong person who's grown from this. क्योंकि इतना yeah, बुरा exactly. नहीं है. अगर ये नाना करता रहेगा ना, it's gonna make it worse, in my opinion. Mm. Yeah, नहीं नहीं, he with, yeah, has to admit to it for sure. पर yeah. यार I एक अच्छा. mean, चीज ये भी है ना कि यार जो hmm. जो वो टाइम था उस वक्त लोग इन सब चीजों को लेके ऑफ कोर्स सेंसिटिव थे मगर उतने नहीं थे। अब ये है कि कुछ भी हल्का सा भी कोई कुछ बंदा बोल देता है, इट गेट्स पिक्ड अप लाइक दैट। और Yeah, अगर हाँ, आप नहीं, वो पहले तो है. वो एक अलग डिबेट है. वो एक अलग चीज़ है कि यार सेंसिटिविटीज सोसाइटी की ज़्यादा बढ़ चुकी हैं या बहुत बहुत अनरियलिस्टिक हो yeah. चुकी There's हैं. there's always a फिर वो mob waiting. वो तो है या ऐसा. जैन, जो हमने वो डेव शपेल पे बात करी थी हमने इसमें कोई शक नहीं है ब्रीफली. मगर मेरी जो मेरा main gripe is with the Yorkshire Cricket Club itself, the way they या handle it. एब्सोल्युटली, वो तो खैर, नो डाउट, नो हैंड्स So डाउन, वो हमारा एक एग्रीमेंट उसमें कि Yorkshire Cricket Club should pay the price, yeah, exactly. whatever it is, if it's financially, if it's legally, whatever it is, they should be paying that price, and Azim Rafiq should be compensated heavily. कॉम्पनसेटेड। Uh, Speaking of um, trying to recover your personality or lost reputation, did you guys see the whole episode between Dr. Niazi and Shoaib Akhtar? क्या कोई follow करा था उसको? That या was या that was just so ridiculous, man. That was. I think he said sorry or something. I believe. Then he Yes, said, so "I मैं तुम लोगों को that बताता हूँ उस पे मेरा ही सेड ओपिनियन क्या सॉरी था. तुम लोग इवेंचुअली। सुन तो लो, बताता ना वो क्या yeah, हुआ he था. said खैर, it today, I think. ओके। तो हाँ, तो वो मैंने उसका पूरा इंटरव्यू देखा. पाया था रऊफ क्लासरा, who's the journalist, he conducted, in my opinion, a fantastic interview, because he went in there like with research, क्योंकि sometimes ऐसा होता है कि जो political journalists होते हैं ना, when they try to cover sports stories, they हम्म। look absolutely ridiculous doing it, because they have no हम्म। research, they have no depth. जिस तरह से या यही उठो, जैसे वसीम बदामी जैसे बैंड गया वो क्रिकेट के ऊपर वो शो कर रहा होता है, ही सो सतही, लाइक और या फिर अभी वो वो, निदा यासिर with Formula One गाड़ियाँ. It हाँ, becomes लाइक like it becomes like so complete parody. But exactly, a parody वो बना रहे थे अपनी. But Rauf Klasa, like, to my surprise, because he's not like the most eloquent speakers, like कोई कहोगे ना यार, he's not like your Najam Setis जिसको कहेंगे अंग्रेजी भी अच्छी आती है और बोलने में बड़ा अच्छा है, हम्म। or what's his name, Moeed Pirzada or something like that. No, he's very like, जिस तरह से एक लोकल एक वो होता है, एक रिपोर्टर टाइप का, very respected journalist. He went in right. there, asked some really good questions. He started with the fact कि चलो आपकी हिस्ट्री क्या है, स्टोरी क्या है, like to get the facts straight कि where is Doc coming from. um Dr. Noman, I have no love lost against him. I've never been a fan of his work, to be honest. या I think he does come across as someone who's very pompous or proud, or फालतू के ऊपर से आता है वो, मुझे हम्म। लगता था. um, लेकिन he actually came out of that interview. I was impressed. I was like, wow, Well, like he he. was contrite, right? He was trying to. I No, think, no, but to be ऐसा honest, the होता है. public side was so against him that he had no other option. Though. I mean, what was he No, gonna? ऐसा What होता है. was he gonna say? ऐसा Double होता है down? कि, नो नो नहीं, ऐसा होता है कि कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि they say sorry, but then it feels like they're just trying to save ass. हम्म। um but that guy owned up to everything. He was like, yeah, Right, देखो, I am the director of the channel, I'm the right. host. I should not have उसने पहले पूरा interfered.
उसने पूरा पूरा बैकग्राउंड दिया कि यार शोएब अख्तर के साथ सिचुएशन क्या चल रही थी, तो उसने बताया कि व्हाट इट बबल डाउन टू, बॉयल डाउन टू, तो like apparently Shoaib Akhtar had an exclusive contract with PTV. He was required not to do his videos on his YouTube channel or speak to Geo or Falan Dhamaka because he's a superstar. तो PTV and he's a buddy of Shoaib Akhtar. Like बोल रहा था कि मैं I know him when he was not known at all. Like बच्चा था ये. तो वो उसको लेके जाता था ट्रेनिंग करवाने भी. So they have a very long relationship. 20 साल की रिलेशनशिप इनकी, 30 साल की. तो um, so he's a buddy and now he brings in his buddy, like for example whatever we will do, right? अगर हम अपने किसी दोस्त को किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएंगे, especially when we are like signing the check or the तो we'll give him the benefit of the doubt, we'll protect him. वो कभी कभार नहीं आता था शो पे, तो उसको डंडे पड़ते थे ऊपर से कि भाई क्या हम मुफ्त के पैसे दे रहे हैं, he's not coming, but then he's in Dubai, doing a show or there, whatever जो भी था. तो he was trying to save ass अपनी भी और उसकी भी. So all of this was coming, and then he goes and does a show with Geo, like program with Geo, when it was apparent कि भाई हमारा contract है, you can't do these things. तो उसने बोला था कि, and then he passed a comment mid show जिसमें शोएब अख्तर ने जो कैमरे के ऊपर आया था कि someone came to work, उसने बोला था ना कि यार कोई रिसर्च करके आया है, काम करने दो, इस तरह करके उसने कुछ उसको टॉन्ट किया, तो उस पर उसकी हट गई. उसने बोला दैट वाज द जल गई थी फुल. तो which is funny coming from Shoaib Akhtar, by the way, हाँ, because which is funny, I've exactly. never found But him to be analytically engaging whatsoever. वो तगड़े no दिलेरी way. की बातें करता है हमेशा. So हाँ, he is not फटा even टेक्निकली वेरी साउंड. लाइक अगर उसके बॉलिंग में बात करो ना, सिर्फ बॉलिंग एक्शन और लाइक फुट फुट कहाँ पड़ रहा है और लाइक मगर overall जॉइंट्स एंड एवरीथिंग. analysis is just like कि हाँ, दिलेरी से और जानदार बैट्समैन होना चाहिए. नहीं. What the fuck मैं is that even? क्रिकेट स्ट्रेटजी पे बात नहीं कर रहा. मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अगर बॉलिंग पे उससे बात कर रहा हूँ बॉलिंग ना, या he comes across like someone who knows what he's talking about. And I mean, he फिर better, right? और He's ये मैं या more than 400 in एग्जैक्टली national राइट. cricket. तो वो पॉइंट ऐसा आया था कि वो बॉयल ओवर कर गया, एंड देन ही सेड के इट्स नॉट एक्सक्यूज, 100% नॉट एक्सक्यूज. मैंने उसने बताया कि मैंने अब्बा को जब ये बात बताई, अब्बा सॉ द उसके अब्बा अपेरेंटली इज कमिंग, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ बैकग्राउंड, आर्मी बैकग्राउंड. तो उसने बोला कि मेरे अब्बा ने तो 100%, उससे पूछा रऊफ क्लास ने कि व्हाट डिड योर अब्बा से अबाउट दिस होल एपिसोड. तो उसने बोला कि ही सेड कि यू आर रॉन्ग, 100% यू आर रॉन्ग, नो इफ्स एंड बट्स. नो, क्या यार आपके जो भी स्टोरी थी इट इज इररेलेवेंट. आपके साथ वो डेविड गावर बैठा हुआ है, विव रिचर्ड्स बैठा हुआ है. कम ऑन, लाइक पुल योर सॉक्स टुगेदर. अगर कोई मसला भी था ऑफ एयर, जाके आफ्टर द शो डिस्कस इट आउट, हैश इट आउट, फायर हिम और व्हाटएवर, और लीव द शो, क्विट द शो आफ्टर द शो, राइट? कि यार मुझसे नहीं हो रहा है ये, बैंड क्या है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, उसको सर्व नहीं कर रहा सही तरीके से, फिर So ही डजंट awkward शो अप though. टू वर्क, yeah. और and then ऊपर से ओवर स्मार्टनेस दिखा रहा है ये वो. तो ही वाज लाइक आई हैड He इनफ, ही कुड even हैव डन tried दैट. to make correct it, हाँ, right? Like शोएब अख्तर शोएब टू. अख्तर ने तो गेम भी, मतलब उसने वो राजू वाला काम किया. हम तो यहाँ प्यार से कंफू कराटे की फाइट प्रैक्टिस कर रहे थे प्यार से, मगर Shoaib उसने Akhtar फिर भी नहीं covered समझा. himself. Yeah, Shoaib Akhtar actually covered himself in a lot of glory, as if he was. yeah. होता है ना कि एक आउटर बॉडी एक्सपीरियंस होता है कि when you like, नहीं नहीं ज़ेब अभी सह ले, अभी जूते खा ले, क्योंकि इसको दिख रहा होता था कि अभी आगे वाले जो दिन आने वाले हैं ना, इसमें इसकी फुल लगने वाली है. तो ना हाँ. शोएब अख्तर वाज फोरसीइंग दैट. उसने बोला भाई ये तो खुद अपने पैर पर खिलाड़ी मारे, आप और अच्छे बन जाओ. वो नहीं नन्हे बच्चे बन जाते हैं कि अच्छा आई एम सॉरी प्लीज, ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें प्लीज, ऐसा नहीं करें. वो He got सब very curt. I think that's the word. He was like, he okay. was very smart. Like you could call it whatever it is, but I think he handled it really well, Shoaib Akhtar, when that Yeah. whole thing went down. So But here's the thing: what I don't like from this whole thing episode, and is Shoaib Akhtar ने ये बात कही, और people around social media or on TV, everyone is saying it. कि यार the main problem is कि आपने इतने बड़े national hero को disrespect से treat किया. Being a national hero or a sportsman has nothing to do with this. Absolutely. मगर him being a national hero या एक sporting icon or whatever, does it it just magnifies it. It just magnifies it. It doesn't really mean afford him कि extra respect or dignity as a human being. मगर Hmm. it's like saying that if he said it to the common person on the street, it would have been fine. No one तो cared. खैर है, हाँ. क्योंकि नहीं आपने एक national hero से ऐसा कहा कि ये गलत आपने किया, आपको निकाल देना I चाहिए. wonder if और शोएब अख्तर ने भी इस कौन तरह है का यार, कर दिया कि यार मैं नेशनल हीरो के साथ अब ऐसी बातें करूंगा, किसी के साथ ऐसी बात करनी
चाहिए, not just a हाँ नहीं, he was national kind hero. of like, हाँ he थोड़ा सा humble हो जाता है इंसान, वो अपने आप को नेशनल ट्रेजर, नेशनल हीरो बोल रहा था. That was kind of like a I stretch. mean, which is again, I mean, I don't know. I mean, did he win an international trophy? Ugh. Anyways, that's a चल different यार, thing. come on यार, नहीं यार, Come ऐसा on, तो ना कर come यार. on, शोएब come अख्तर on. is a hero यार, come on. No, शोएब He's, अख्तर is a hero. he's a cricketing hero, but is he a national icon? Come on, is he Wasim? Is he He Wafa? Is he is. No, he is like obviously, like still आप ये is नहीं the कहो, fastest bowler in the world. fastest? ये ना That's बोलो what कि he is. That was his whole life, being the Yeah. fastest. हाँ, Not the पर best, ये not नहीं the कह सकते. longest lasting. हाँ, No, Exactly. best तो ठीक है, वो definitely अलग not. चीज़ है, वो अलग चीज़ है. मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि at this point in time, is he a brand in your country? Yes, he is. No, he's a brand, yeah, Is yeah, he he is, but he's not is like a he national with? icon. He's not like he's not going to I his mean, face is not going to he's. be beside the Khyber Pass in a restaurant, right? It's not that. So I mean, चलो ठीक है, I Hmm. give you that, but at the same time, like we've grown up watching him यार. हम लोग I वसीम और did वकार ईरा में नहीं I पैदा हुए was थे. a huge fan As of much his. as Yeah. we've liked to see, like as much as we've loved seeing Wasim and Waqar, but we caught them at the end of their careers. Yeah. Yeah, Shoaib yeah. Akhtar, we caught him at And the middle of And his like Shoaib, glory. Yeah. he Mhm. was he was also prone to outbursts and then slips in character, especially like hitting people with bats and stuff. So I think चलो people ठीक like है, him वो should have more empathy. leeway. Yeah, empathy for slips नहीं वो ठीक है, like that. वो You know, ठीक है, वो it's what ठीक है, I'm वो मैं saying. एग्री करता हूँ उससे, वो इतनी मैं एग्री करता हूँ. outrage हो रही है कि मेरे खिलाफ मैं हीरो मेरे खिलाफ आपने कैसे किया. It's sort of it stings a little in my eyes, but अच्छा अच्छा, original वो point फिर is true. Original point ठीक इसका है, वो इसका गलत होगा, उसके साथ गलत हुआ है. ये तो मैं वो मानता हूँ. वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैं उसके साथ साथ उसकी एक्सटेंशन में तुम्हारी बात में एग्री करते हुए एक और बात बोलूंगा कि if he's so concerned about icons and figures and national figures and all of that, heroes, then I mean some of the word choice of words he has had for Misbah or Waqar Yunus when they were coaches, like Even Wasim on Yeah. and even was controversially yours his autobiography. I've read it. I think half of it. It's really good. But उसने अपने seniors या जो भी आप कहना चाहें या icons जो से जो greater cricketers than he is, he had taken them to the woodshed, right? So I तो don't know. हाँ exactly, so it's a bit rich coming from him, I It get is it, very but rich. at the same point I thought that whatever happened with him was not right, what was No, it not wasn't right. on. It was not right. Yeah. Absolutely not right. Or and I feel like Dr. Nia is like uh, after that interview, I'm not a fan of his at all. Still not am. Mhm. But I think after that, when I heard him, How did he get I into sports journalism? understood. He's a medical doctor, isn't he? Why is he a sports journalist? No, that's what I'm saying. Acha, It's kind of he's a like why medical Fakhre doctor. Alam is. Fakhre Alam क्या है? वो तो singer rapper था. What is Fakhri he Alam, though? by the What is way. he though? What is he though? Fakhri Alam. He's an aviator. He's a singer. I don't know. Anyways, I think इसकी you're doing a good ट्विटर job. पे तो ये लिखा हुआ He's a है. ट्विटर rapper. पे तो ये लिखा. Alam. But Alam. नहीं मगर लेकिन still he does a good he job. does it really good though. इसको at least Because ब्रॉडकास्टिंग he में रहा है. doesn't make it about himself Yeah. necessarily. Dr. Noman Yeah. was He like very self-centered. He used to like range with his self-centered, हाँ. analysis too. Yeah. By the way, not very deep, but he used to analyze, interrupt Yeah. guests by saying, "Yeah, yeah, well, actually," and all. It हाँ, was super awkward at times, especially when he was like very going back awkward. and forth with Yeah. like Yeah. Gower and It's like मुझे Richard. सब कुछ आता है, आपको कुछ You नहीं know, आता. Like हाँ it's नहीं like वो उसका प्रॉब्लम है. The yeah. way he runs the show is ridiculous. I think Hmm. सबसे पहले तो मुझे शो का फॉर्मेट नहीं पसंद है यार. आपने इंग्लिश और yeah, उर्दू you साथ क्यों नहीं mentioned that. करते हो कि यार? यार वो अगर आधे टाइम आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, फिर उर्दू आ जाती है बीच में, and वो हाँ, अजीब awkwardness चल रही, समझ में नहीं आता. It's so what the fuck is ridiculous. going on, guys? I'm और बहुत never a fan बोरिंग of never. बोरिंग भी लगता है. Like just watching that, it's like एक तो वैसे ही पीटीवी का सेट ऊपर से it's just A plus वो जो A Sports का आ रहा है, I'm following it's that. I'm actually amazing. enjoying it. It's I very watch good. It's good. every It's day. good. It's उसके fun. हर एपिसोड The देख रहा हूँ मैं. analysis, It's fun. मैं भी देख रहा हूँ. मैं भी हर Yeah. एपिसोड देख रहा हूँ. The Yeah. analysis that both Wasim, Misbah and Waqar and Wahab is really Yeah. good, man. Technically Yeah. बहुत And the like balancing astute. मतलब वो fun और proper और analysis बैंटर को जो है, proper वो हाय कर हाय रहे हाय, हैं. जो हाँ. बैंटर है ना उसके अंदर, that's the बहुत जान, like वो जबरदस्त. जान है Yeah. शो. वो तुम देख रहे हो Yeah, उसके अंदर एक रिकरिंग सेगमेंट या जोक बन चुका है, वो धानी वाला. तकरीबन धाने वाला, हाँ, जो नहीं लोग नहीं पूछते रहते हैं उससे कि भाई क्यों नहीं खेला रहे इससे, वो बोलता है भाई रजीम है उसमें रिजर्व्स में है वगैरह वगैरह. वसीम अकरम की हट गई थी उससे. बार बार उस एक सवाल आता था जब वो आस्क द एक्सपर्ट्स, जो उनका प्रोग्राम का सेगमेंट है ना, कह रहे धानी को चांस क्यों नहीं दे रहे. वो कह रहा है भाई खुदा के वास्ते वो रिजर्व में है, रिजर्व में रिजर्व वो तभी बन इंजरी खेलेगा की जब बात कोई करते इंजर हैं. होगा. हाँ, बार बार वो सवाल आ जाए धानी को क्यों नहीं खिला रहे. अच्छा धानी को नहीं तो उस्मान कादिर को ले आए ना. अबे वो भी साले हट गई हुई थी. तो वो रोज जब वो हड्डी भी सवाल, टाइट थी वसीम अकरम की.
उसकी हट जाती फुल। खैर वो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा क्लासिक तरीके Yeah, से चल रहा है। it's a गोइंग बैक but टू by the way, लाइक Wahab has gotten a phenomenal like transplant. By the way, I noticed that it's world class. But did he go to Turkey or something? But I noticed that, man, he's done। first day. हाँ हाँ, Like नहीं वो प्रॉपर he प्रॉपर had भाई lost. काम He was कर। like Rana Magidul Hassan, हाँ basically. या हाँ बंदे टर्की ने गया भाई होगा वो छू और कर सारी है, जगह। हम्म। छू कर है वो। बंदे ने भाई नहीं नहीं रिकॉर्ड तो मारा। वो He's good though. He's good. वो तो या नहीं he's मजा आ रहा हाँ, है, दैट्स द बेस्ट। that shows Fakhre Alam I like, I think Fakhre हम्म Alam Fun. is handling that show is pretty well because he's not like putting words in anyone's mouth। उसके पास सामने एक्सपर्ट, उसके पास लेजेंड्स बैठे हुए हैं यार। या Like नहीं when इवन you ही have लाइक वो भी legends in बात your करते करते बीच में बोलता है कि आई वुडंट बी एबल टू say too much on it because मुझे इतना नहीं पता, you I want to hear what you guys have to say. हाँ, and to be honest, Yeah, people want to hear what these guys have to say, not Fakhre exactly. Alam's Yeah, opinion. exactly. Yeah, Similarly, when they're watching PTV, they don't want to listen to what Dr. Noman has to yeah. say. They No want to man, listen to what exactly. others, the guests have to say. So Dr. Noman ka opinion doesn't matter in those. He should be Yeah, running the show. He's just the moderator basically, but he yeah, was yeah. वो be all and end all kind of deal. हाँ एग्जैक्टली उसमें लाइक Hmm. ग्रिलिंग कर रहा है, अजीब अजीब पागलपना चल रहा है। खैर एनीवे, एक और फाइनल इंसिडेंट देन विल call it a day। I know it's pretty late over there where you guys are, Hmm. which really personally pissed me off, and I wanted to do, wanted to vent on it, and it's good that we're doing this podcast just maybe we can discuss this. Recently, I don't know, did you guys see that whole episode with आसिफ अली की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसपे यूनिस खान ने कमेंटेट किया on that, where he in which Asif Ali thanked Ms. Bowler? Did you guys No. no, see no. that? अच्छा मैं बताता हूँ। तो Mhm. आसिफ अली after he hit 4 sixes against Afghanistan Hmm. goes and does a press conference, of course, जिसमें लोग उसके पूछते हैं कि like, and then he says You out of thank Misbah. Yeah. gratitude, Hmm. gratitude and rightfully so, Misbah has been the guy who pushed for this guy, right? Yeah. जूते भी Yeah, खाए इसकी वजह से, पूरे मुल्क ने गालियां दी थी इसको भी, मिसबा को भी, and Misbah stuck with him. Similarly, रिजवान को ओपन करवाना, it was And even Misbah's Dean brainchild। Jones had a big part with Asif. Yeah. Exactly, Dean तो Jones had a यूनुस खान huge ने play, क्या and then करा? Dean, अब वही बता रहा हूँ तुम्हें। अब यूनिस खान know this, and I'm pretty sure you guys know this, has a history with Misbah, like where Hmm. Misbah has been nothing but gracious to him Yeah. whenever he's like spoken। अभी इसी शो में तुमने देखा होगा जो के चल रहा है ए स्पोर्ट्स पे, Hmm. जब बात कर रहे थे कि यार आप जब पाकिस्तान टीम में आए तो आपने किसको अपना मॉडल बनाया, तो उसने कहा भाई मैं टीम में आया तो मोहम्मद यूसुफ थे उस वक्त, Hmm. इंजमाम उल हक थे। कि भाई ये लोग तो मेरे लेवल पे थे ही नहीं, मैं Hmm. उनको लाइक उनको देख के क्या करता मैं, क्योंकि जो मुझे करीब तरीन लगता था ना, जिसको मैं कहता था जिसको मैंने मॉडल बनाया अपना, वो यूनुस खान था। Hmm. तो मिसबा उल हक ऑलवेज बिन लाइक ग्रेशियस अबाउट यूनुस खान। एक ज़माने में उसने उसने एयर वाई पे वसीम बदामी के शो में उससे पूछा था कि आई थिंक समवन आस्क्ड हिम, वसीम बदामी ने पूछा था कि भाई who's a better batsman or something, like you or मिसबा, something like that, जिसमें उसने Hmm. बोला था कि यार कोई कंपैरिजन नहीं है मेरा और मिसबा का, मैंने 10,000 रन बनाए, लाइक बहुत पॉम्पस तरीके से। यूनुस खान आई लव हिम, बट Yeah. समटाइम्स ही इज सो लाइक, कुछ लोग होते हैं ना कि यार हीरोज होते हैं बट देर लाइक एसहोल पर्सनैलिटी, जिस तरह मोहम्मद यूसुफ, Hmm. Hmm. अमेजिंग बैट्समैन, एसहोल पर्सनैलिटी। Yeah. And आमिर सुहेल, and great। in Zamam ul Haq, I appreciate that Amir he's Sohail तो confident, that man. like Amir yeah, Sohail to bhai, हलू। Amir Sohail is like punching above his weight. He behaves like he's he's yeah. like तो खैर एनीवे, तो Mian एनीवे Mian. इस शो में एयर वाई के ही शो में अपेरेंटली अगेन, which the show is just dying to take out controversy। जब इंडिया अभी अफगानिस्तान से जीता तो उसमें भी वो फिक्सिंग और ये सारी बकचोदियां शुरू कर दी थी इसने। It's तो basically उसमें the वो पैर, वो जो आज तक इंडिया के साइड पे ना वो हाँ ये वही एयरवाई है, बनना चाह रहा है, यही इट्स है, बेसिकली। हाँ ये वही चल, एग्जैक्टली वही चल, इनकी बकचोदियां चलती रहती हैं, कोई सीरियस डिस्कशन नहीं होती। एक तो वो बराबर में वो बैठा होता है तनवीर, who's like a shit storm। तो खैर एनीवे, तो कुक्कड़। उसमें उस these guys are like known for being anti Misbah। तनवीर है वो ऑब्वियस लेफ्टी दादी तनवीर अहमद यार, तनवीर अहमद बॉलर जो था, जो 3-4 वनडे खेले उसके साथ। सोहेल तनवीर। सोहेल तनवीर या सोहेल तनवीर तनवीर अहमद? नहीं बे, तनवीर अहमद की बात कर रहा हूँ मैं, सोहेल तनवीर तनवीर नहीं तनवीर अहमद है। कौन? अहमद। सोहेल अच्छा, तनवीर इज अ you गुड know गाय, राइट हैंडेड मीडियम फास्ट। हाँ मीडियम फास्ट बॉलर अच्छा है। वो, अच्छा वो भी मैंने बैठ तो रहे हैं वो। सोहेल तनवीर को लिया है। वो वही में तो सोहेल सोहेल तनवीर तनवीर तो तो खैर फिर भी काफी मुनासिब बंदा है। सीधा साधा सा बंदा है अच्छा वो। ओके। सोहेल तनवीर तो मुनासिब बंदा है वो, लाइक ही इज अ गुड गाय, आई लाइक हिम। हम्म। बट तो उसने फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई आसिफ अली की। आसिफ अली ऑब्वियसली व्हेन ही थैंक्ड मिसबा, तो सबकी लग गई यहाँ पर कि अबे यार अब क्या बोले, हम तो मिसबा को गालियां देते रहे कि अब क्योंकि, तो उस पे यूनुस खान, आई वाज होपिंग ही वाज कमिंग अप विद लाइक कोई मजाक कर रहा है, बट इट वाज नॉट अ जोक। ही सेज
कि आसिफ अली ये बात करते हुए आपने नोट किया वो नीचे देख रहे थे। तो हम्म, वसीम अदामी ने बोला तो क्या मतलब इसका, उसने बोला था स्क्रिप्ट इट दिए। इट सीम लाइक, नहीं इट सीम लाइक एज इफ कि बस उनका दिल नहीं था ये दिल कहने का, नहीं है बस लेकिन कहने उन्होंने कह का, दिया। मगर कह रहा है, लाइक व्हाट द आर तो यू, मैंने कहा आर किसने यू इसको फोर्स फकिंग किया किडिंग था? मी? नहीं तो लाइक किसी ने उसे पूछा नहीं था कि आप किसको थैंक करना चाहेंगे आपके करियर, ही जस्ट टुक इट अपॉन हिमसेल्फ एंड ही इज बीइंग द Yeah, ग्रेशियस गाय आसिफ he अली is. He wasn't. said, you know what, I don't want to forget people who backed me when I was, being thrashed all over the place by you guys. तो हम्म उसने बोला कि भाई मिसबा वाज द गाय हु ब्रॉट मी इन द, फैसलाबाद से सपोर्ट किया था उसे, फैसलाबाद से फिर हम्म इस्लामाबाद यूनाइटेड में लेकर आया, इस्लामाबाद यूनाइटेड से फिर पाकिस्तान टीम में लेकर आया एंड स्टक विद हिम बिकॉज ही न्यू कि दिस गाय हैज समथिंग। या तो उस It's पे वो just कह रहा है कि यार ये ऐसा, तो मुझे इतना गुस्सा है इस चीज़ पे कि यार here are you यूनुस खान, 10,000 टेस्ट runs, 30 हम्म odd test centuries, known while, like you've scored 100 against every country that plays cricket in every ground that has a cricket stadium. तो थोड़ा सा ग्रेस और वो नहीं आपका वो दिखता कि आप थोड़ा सा लाइक होता है ना कि some people you look up to as heroes, but या why though? I mean, but उसकी not, issue क्या है इस बात में? But पता नहीं क्या, enforcement. आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा इसी उसी में टंग इन चीक व्हिच इज सो रिडिकुलस, मुझे इतना बुरा लगता है इस तरह की बातें जिसमें उसने बोला कि यार ये टीम में ना बहुत प्रैक्टिस होती थी, मैं जब अभी क्योंकि बैटिंग कंसल्टेंट था ना, ही वाज वर्किंग हम्म अंडर मिसबा टेक्निकली। तो बोल रहा है कि अम, 8 घंटे की प्रैक्टिस होती थी क्योंकि कोविड टाइम्स में ऑब्वियसली आप कोई मैचेस तो नहीं खेल रहे होते थे, तो आपस में ही खेलते रहते थे ये लोग। तो हम्म कोच में ना मिसबाउल्लाह के वकार यूनिस दे वर लाइक 8 घंटे की सुबह से लेकर, क्योंकि कुछ करने को था नहीं तो वी जस्ट प्रैक्टिस। तो वो कह रहा था कि बस हमें नमाज का ब्रेक मिलता था, नमाज का ब्रेक मिलता था जिसमें मैं सिर्फ मैं नमाज पढ़ने जाता था, बाकी मिसबा और वकार वहीं होते थे। क्या क्या आगे बढ़ गया, आई मीन व्हाई डिड यू हैव टू से दैट? Why do you have to like again? वही है ना कि आप लाइक बस आर यू ट्राइंग टू से कि देखो लोगों को सुन के आप ना लोगों में वो अंडर वो करना चाह रहे हो सबकॉन्शियसली कि भाई मैं आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड मुस्लिम एंड दीस हम्म गाइस, वो like even जबरदस्ती though Misbah कंट्रोवर्सी has a क्रिएट करनी है। fucking big beard, man, like Misbah is apparently like he looks the part. You don't even या look the part. हम्म So these small like एक childish पना है, like I've always seen This childish is, पना. this is, I Even think, Misbah very. like, I think this is very typical of Pakistani cricketing legends. It's not. He's not the first one. He's not going to be the last. आप सरफराज नवाज को देख लीजिए. He हम्म was deranged for a long, long time, right? The या inventor of हाँ reverse swing, one of the greatest bowlers ever, and all that. मगर उसने पता नहीं उसके साथ क्या हो गया था. Like the sourest of grapes from him. अभी हम आमिर सुहेल की बात कर रहे थे. Does it come हाँ, down to education too? Do you think? no, it's just jealousy, it's just professional jealousy, It's simple sour as grapes, that. man. Sour या grapes. सारग्रेस या वो होता है ना कि यार आपकी इनेप्ट पर्सनालिटी होती है, आप अपने आप को लाइक आप हाँ, आप हर कोई एहसास हैंडल नहीं कर कमतरी है सकता। व्हाटएवर समथिंग, हाँ या आपको कुछ या कमी हो, आपके अंदर कोई कमी होती है ना, तो आप फिर उसको ओवरकम करते हो उस तरीके से। ऑल्दो वही तो मैं कह रहा हम्म हूँ कि यूनुस खान हैज नो फकिंग रीजन टू डू दिस थिंग्स। हाँ वही ना, उसने मतलब अगर या वो ग्रेशियस हो जाए ना तो उसकी इज्जत में कोई 10 करोड़ मरतबा इजाफा हो जाए, एज इफ या ऐसा इजाफा नहीं होगा। अब मिसबाउल्लाह को क्या पड़ी है, लेकिन मिसबाउल्लाह एट एवरी सिंगल स्टेज उससे डायरेक्ट सवाल पूछा गया, शोएब अख्तर ने आपको बोला कि आप जो है ना बुजदिल हो, आप हम्म टिमिड कैप्टन हो। तो उसने बोला मिसबाह उल हक ने बोला कि यार देखिए मेरा एक सिंपल सा रूल है, जिन के साथ मैं क्रिकेट खेला हूँ ना, उनके बारे में मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगा। क्या कि मैंने शोएब अख्तर के साथ खेला हुआ है, आई हैव शेयर्ड द ड्रेसिंग रूम विद हिम, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग टू हिम। I guess it just comes down वेल to the दैट personality and the It's class, person. man. That's दिस what it is. गाय And it's class. It's class is free. Anyone can have it. Yeah. मगर एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मुझे कोई मिसबाह उल हक, ही इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, बट बिकॉज़ ऑफ दीज़ थिंग्स Yeah. आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम क्योंकि वो ही स्पीक्स but लाइक it goes to show why he was successful and why Successful. he Yeah. was या, successful well into his 40s, right? He led Pakistan's यप, number one test team well into his 40s. He had a lot of times when he could have just quit because he returned to the team late in his late to mid 30s, Hmm. हाँ, persevered. So a lot of his personal qualities are reflected in his conduct to this day, right? Even though I यप, don't think यप, as a coach he covered himself with too much glory because I think he spread himself out too thin. Selector ही बन गया था एक एंड दैट्स जमाने फाइन, एंड में. दैट्स It Hmm. happens. फाइन, लाइक But as a इट person, हैपेंस। you cannot have any qualms or any personal criticism of him Yeah. and his conduct, man, and his professionalism and his status as a bona fide legend of Pakistan cricket. He is. Oh yeah, Um, yeah. Like Mm-hmm. the most successful Test captain in our history. Like, come on, he if he's is not he going to is be the more of legend, an icon than Shoaib Akhtar in my mind. He led Pakistan to the number one Test Oh cricket team. yes. No, He agreed. can't he Agreed. cannot yeah, he dispute. has something to show for.
He has Yeah, something to show for, not just like जिसमें वो speedometer जिसमें yeah, नहीं 100 दिखा and रहा है. 100.2. That's नहीं is that worth more than being number one cricketing nation, Test cricketing nation? I don't think so. मिसबा ने with जहाँ with से निकाला with है rid- टीम को, इट्स with या ridiculous By the way, resources, he भाई. also has the fastest Test century at टेस्ट that time. सेंचुरी है या So Yep. that's again a With huge ridiculous plus. resources, भाई. Resources भी क्या थे इनके आपके पास? You had no fast bowlers. You only had Ajmal यार as your इसने main उठाया था key. कब था टीम को, जब इंजमाम, जब हम लोग वर्स्ट हमारा वर्ल्ड कप जो हुआ था उस सब के बाद तो इसने The आके टीम worst, को संभाला worst, था। depressing World नहीं, Cup. 2010 में उठाया उसने, 2010 में उठाया नहीं उसने टीम मगर को जब वो आई मीन जब स्पॉट वो फिक्सिंग आया वाले था क्राइसिस टीम निकले में थे. नहीं या नहीं, जब पहली दफा आया था टीम में, he's right कि वो हाँ, दो तब आया था. चैंपियन आया था. हाँ, 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 तब आया था वो, तब तो आया था. Bilateral, बट लेकिन trilateral versus हाँ Australia. तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें लाइक देख के मुझे होता है कि यार एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट डिवीजन होना चाहिए कि हाई अचीवर्स, लेजेंड्स हम्म विद हाई अचीवर्स. लाइक लेजेंड्स मेरे दिमाग में वो लोग होते हैं जिसमें क्लास होती है. अब जैसे हम्म मिसबा, सॉरी, वसीम अकरम है. He does have Wasim that. on the show, you've seen on the show, he's asking fucking Wahab Riaz, yeah Wahab, हम्म what's your opinion on this? Are you kidding me? If I was Wahab Riaz, like fucking, are you kidding me? एक तो आप left arm bowler या और मैं Yeah. भी एक left arm bowler, and if you're asking me as a, are you kidding me? You tell me what's the issue. But that shows कि यार you're not afraid, you're, आपका दिल छोटा नहीं है. आप कहते हो यार कि हम्म इसको स्पॉटलाइट मिल जाए, आप स्पॉटलाइट देते हो Yeah. कि यार Yeah, I mean, आप हीरो it's बनो. yeah, Wasim Akram asking Wahab Riaz is like, fucking Jimmy Page asking me, yeah, what do you think about this guitar? I'm like, what? Exactly. Yeah, Ex- yeah. exactly. So it's तो like I probably me, क्योंकि like minus the hairpiece वहाँ पे तो 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 एग्जैक्टली. तो ये चीजें आपको बड़ा बनाती हैं, आपको दिखाती हैं कि आपके अंदर. अब जैसे विराट कोहली फॉर एग्जांपल, हम्म Virat Kohli didn't have to go over to Babar Azam and Rizwan and give them a hug after the game. All of या that, Virat that Kohli has shows like क्या. grown on me, man. Virat Kohli has grown on me in the past 5-6 years. आई He's on गेस club. Oh yeah, Yeah, absolutely grown on me. आई गेस Absolutely grown. दोनों अच्छा इस दोनों साइड पे इस तरीके के क्रिकेटर्स अगर आप देखा जाए, जो एक वो है, जगह है वो जो है. तुम बात कर रहे हो, जैसे सचिन वगैरह को देख लो, आप विराट को देख लो, सचिन भी धोनी को छोटा देख लो। छोटा छोटा आदमी. Again, नहीं Sachin, all due respect to his career as a cricketer, again छोटा आदमी. नहीं बट ही Again वो डजंट छोटी छोटी. कम आउट एंड स्पीक समथिंग वियर्ड अबाउट एनीवन। एक वो क्लास है he अबे takes जो वियर्ड his नहीं, वो he takes चैंपियंस his ट्रॉफी का time. फाइनल हुआ था. He takes चैंपियंस his ट्रॉफी का time. फाइनल हुआ और वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल में जब पाकिस्तान ने हराया तो ही इज ट्वीटिंग ऑन फकिंग हॉकी टीम विनिंग समथिंग. Yeah, Like come हाँ on, वो show तो some था। class, it man. was so petty. मगर Show मगर some class, man. नहीं विराट उसके has बाद फिर talent. ये विराट definitely हरभजन, has उसके बाद जो प्लेयर्स आते हैं ना हरभजन टाइप के, हर बंदा तो लेजेंड भी नहीं है, मैं like to वही be कह रहा हूँ कि honest. हरभजन जो है ना, दैट्स हमारे, अगर आप इस सहवाग. साइड पे देखें तो वो शोएब अख्तर है। हाँ, ये ऐसा है कि You उसी get what I उसी mean? लेवल के वो ये लोग. हाँ, हाँ तो एक सहवाग वो भी सहवाग वो और ये लोग. pro hard type है और एग्जैक्टली आपका I गौतम always गंभीर enjoyed वगैरह ये सब जो है। always enjoyed Saurav's commentary and his personality. यस सौरभ वाज गुड, सौरभ वाज सौरभ फाइन, He सौरभ या वाज was इज फाइन. fine. रियली तो गुड। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने डिमीनर से आपको बताते हैं कि आई एम अ बिग गाय, राइट. डिमीनर से यस पता लगता है कि ही इज अ बिग या गाय. और नॉट बाय द रिकॉर्ड. वो रिकॉर्ड की तरह नहीं बार बार इशारा, जिस तरह वो मोहम्मद यूसुफ ना का रमीज अजहर से पड्डा देखा था किसी ने. So was it the oddest आपकी आपकी औकात ही big नहीं है. आपने तो कितनी सेंचुरी बनाई, 2 सेंचुरी बनाई है आपने, पता नहीं ऐसा कुछ बोला था, 2 टेस्ट सेंचुरियां आपकी क्या. ऊपर रिकॉर्ड लेके बैठा था, उसको पता था किसी दिन यूज करूंगा मैं। वही तो कह रहा हूँ. अब आपका यानी कि आपका रिकॉर्ड, आपकी, इफ योर रिकॉर्ड इज स्पीकिंग फॉर योरसेल्फ, देन you're a human being first. You're not a record on a piece of paper, या right? आपकी क्लास ऐसी होनी चाहिए कि बंदा आप खुद बोले कि यार ये बंदा जो है ना, देखो स्कोर्ड लाइक सो आप मेनी उसको रन्स इन देख अ लो, ईयर. हर्षा भोगले को देख लो, वन ऑफ द बिगेस्ट कमेंटेटर, उसका क्या है क्रिकेट में, बट yeah, उसकी भी हर्षा भोगले ने भी यार मुझे बहुत हर्ट किया yeah, अभी रिसेंटली. हर्षा भोगले ने मुझे अभी yeah. वर्ल्ड कप, बट अभी इज कुछ किया नहीं यूजुअली वैसे. प्रीटी गुड। आई मीन ही इज वेरी गुड. आई या एम स्टिल नॉट लाइक, मैं कैंसिल नहीं कर रहा उसे, लेकिन उसने अभी वो जो वकार यूनिस ने एक फिशी स्टेटमेंट दिया था ना, और नमाज वाला भाई इसने यार भड़ मारा था वो भड़ फालतू मारा का था, एंड देन ही अपोलोजाइज अनकंडीशनली व्हाटएवर. उस पे हर्षा भोगले ने पूरी लंबी चौड़ी ट्वीट लिखी कि वकार न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, एंड इस तरह करके ना ही लाइक हिट ऑन, लाइक कंप्लीटली अटैक किया उसको. मेरा प्रॉब्लम सिर्फ उससे नहीं है. ही वाज राइट इन हिज ओपिनियन, लाइक हार्शा, टू क्रिटिसाइज वकार, एंड आई वाज बिहाइंड दैट. बट द थिंग इज के you can't have your you can't pick and choose moments to speak out against या bigotry. I hope So he if spoke you out want to, against the Shami issue though. I don't शामी know if वाला he did, सीन but तो I he hope did he did support Shami, but did he also support the fact that when Virat Kohli came out with a blazing statement in support of Shami, he, उसको पता है उस वक्त
ट्विटर के ऊपर इंडिया में क्या वो कर रहा था, हैशटैग चल रहा था, पता नहीं कि चुप कर भोसड़ी के विराट, समथिंग लाइक दैट, लाइक इट वाज वो तो ट्रेंडिंग इन इंडिया. Why या isn't he तो commenting on that blatant bigotry? that's what I'm saying. Why wasn't he हम्म commenting on that, you big bigotry? Yeah, when Virat's 6-month-old daughter was getting rape threats, why didn't he come या out and saying, like, come on, like, if you're going to, be this Yeah, big because guy, ke Pakistani को criticize करना, I हम्म mean, although he did it, the criticism was warranted, but it's a low-hanging fruit warranted, anyway, right? but हाँ, low hanging fruit, that's what I'm, मेरा प्रॉब्लम हाँ सिर्फ ये था कि यार आपने लो हैंगिंग फ्रूट पे बात की, आपने कभी जिंदगी में कुछ नहीं बोला, आपने ना, अगर आप इतना, आपको बिगेटरी और इस तरह के बारे में बहुत, आप बहुत वोक हो, तो बॉय देयर हर सो चीज मच को गोइंग ऑन इन योर या कंट्री, you could have said so much but you didn't, so come on. Where's Lakshman Sivaramakrishnan, by the way? I love his commentary. Where is he? He was good, हाँ, yeah, I really enjoyed अरुण that लाल भी अच्छा था, commentary. अरुण लाल भी अच्छा वो था. लक्ष्मण उसका मुझे एक चीज याद वो रहेगी कौवे कि वाला, I know you're पाकिस्तान gonna bring कौवे वाला. वो कव्वे वाला याद है क्या था वो that कौवे? क्या? was hilarious That was वो so it was like so it's bad but so risky in today's time. I think it's very risky अगर आज के environment में लिया जाता. वही ना क्या एग्जैक्टली था वो क्या था? पाकिस्तान आए हुए थे मैच से मैच पहले वो किसका दिखा सीरीज रहे थे his morning walk or he was like walking around on the ground, right? अब पतला सा है, like dark सा, पतला सा, पतली टांगे उसकी and all that, right? That's funny. I don't know how the fuck they फिर actually उसके showed it बाद on like they pan to like a crow walking around and they're like no they fucking not hell, just panned they had side they by had a side split screen, दिखा side they by था had a side, split screen, they had a कव्वे split की screen. टांगे थी और उसकी टांगे थी दोनों और कमेंट्री कौन कर रहा था रमीज राजा कर रहा था रमी ज़्यादा हरामी है, रमी बहुत ज़्यादा हरामी, बहुत हरामी है, वो बहुत उसने ना, हरामी. किसकी वो ली थी लौंडा है वो असल यार में. वो जो श्रीलंका का जो था द अ, ब्यूटी ऑफ बीइंग अ, क्या नाम है उसका, रसल रसाना, आनंद रसाना तो नल्ला है यार, एक नंबर का. उसकी तो मारी थी That's what, वसीम अकरम ने शारजा में याद है हम जो है रमीज राजा को सुनते थे and we were like, this guy is the deal because he's the only international Pakistani commentator. But अब उसकी analysis सुनो ना, it's like यार मैं बोल दूं ये बात तो. It's like that. हाँ, Most लेकिन वो कमेंट्री में ना वो चीजें करता था जो I हमारे like दिलों में आ रही Badal होती Khan, थी. by the way. He's been हाँ good. एग्जैक्टली मतलब अब मैं उदास ही हो इज गया था लिटरली कि यार ये हिम, साला जिसमें मिसबा ने चेयरमैन बोला बन था, गया है लाना तो ये तेरे थे. चेयर ये चेयरमैन बन गया तो मैं जो वो कमेंट्री कौन करेगा हमारी तरफ से अब हम लोग सुनेंगे हार्ड कर हैंड्स रहा है ना और ट्विटर पे. माजिद Hard खान को hand. सुनेंगे बादल लाइक खान इज गुड एक्चुअली, बादल Badal खान Khan, I अच्छा like सिंगर है. Badal Khan. मैं वही कहने वाला था. इज Badal नॉट Khan हाँ इज ओके थोड़ी सी उधर आमिर robotic सी सोहेल आवाज है, नहीं but I है like him. आमिर सोहेल तो हाँ, सुधा दे रहा था he's यार likable. अब तो खैर उसने वो बना ली अपनी रेपुटेशन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसमें वो लाइक उसको ही इज इनवाइटेड, लाइक वो मैं देख रहा था कि आमिर सुहेल तो ESPN पता नहीं यार, पे उसकी भी तो आवाज से लगता था सारा एजेंडा लेके आया कोई हटाने वाला. अबे तो उससे उससे मेरी जो सबसे आमिर टाइट सोहेल का लगती जहन थी तुम्हें ना याद है? जहन आमिर सोहेल ना बिल्कुल थर्ड कोई कैमरा देख रहा होता था, लाइक सामने जो है ना गिल्लियां उड़ी होंगी, वो कह रहा होगा वो तो हवा से ऊपर से the third man slipped. इस टाइप की कुछ बात करेगा. हाँ, हाँ अजीब सी रैंडम बात करेगा वो, पता नहीं कौन सा. अच्छा उसके उसकी जो मेरी सबसे ज्यादा हटी थी आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर दैट बैट्समैन पाकिस्तान का आउटस्टैंडिंग आया था आसिम कमाल ठीक हाँ, है तो हिज हमेशा हिज बैटिंग एवरेज करवा वाज डालता हमेशा. 77 ठीक है Never saw the light of day again after that. ही ड्रॉप्ड आसिम कमाल राइट तो उस वक्त चेयरमैन था वो तो Selector था. आमिर सोहेल से पूछा East कि इसको selector. ड्रॉप क्यों किया है उसने 2 मैचेस में 90s का स्कोर किया है और व्हाई आर यू ड्रॉपिंग हिम तो वो बोलता है कि वो जिस मैच में इसने ये स्कोर किया ना पाकिस्तान जीता नहीं तो व्हाट्स द पॉइंट ही सेड आई एम लाइक व्हाट द फक ही इज डूइंग हिज पार्ट अगर बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा तो व्हाई वुड यू ड्रॉप हिम Yeah, it's just अब जैसे very. सिमिलर टू थे कि फवाद आलम है. Fawad फवाद Alam आलम is अगेन Asim एज अ Kamal पर्सन like persevered or who was successful. who या persevered, but लेकिन again he could have gone both ways, right? He could have been like this petty guy or कि मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, blah 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 blah. मैं नहीं खुद ही नेवर दिखाऊंगा डज हर दैट He's सेंचुरी से always, अपने haters को dedicate हाँ, करूंगा, इस तरह की बात नहीं करता हूँ. ना हेटर को नहीं, It's वो all बच्चों वाली last बातें minute. नहीं करता. वो बच्चों वाली वो हरकतें नहीं करता. कहते नहीं I'm like मेरा टाइम यही था, मुझे टाइम मिल गया. Like it's class, it's और that's what like आपको अब respect मेरी मिलती है. एक्टिंग का टाइम है अब वो ड्रामे कर रहा है नहीं उसने तो खैर Speaking of all class, good I for mean, him I man. think या ही इज डूइंग रियली गुड टू सो speaking of class, I think a lot of people can learn from Imran Nazir of all people. जो Imran Nazir. इमरान नजीर said क्या मुझे chances मिले थे, I didn't take advantage of them. रोना Sami बिल्कुल. also said, Sami ने भी एक ज़माने में बोला था, लेकिन बाद में वो स्टेटमेंट बदल दिया उसने, लेकिन Sami shouldn't have no qualms about his international समी को career. बहुत उसको बहुत chances मौका दिए उसको मिला. तो हैं, इतने बहुत चांस chances मिले हैं दिए. कि उसने कुछ तो ज्यादा ही याया के चांस शो में बोला था ना, इमरान नजीर ने, हाँ, याया के मुंह में मारा था ना याया. वो भी एक बच्चा था एक नंबर का याया. बहुत वो भी उंगलियां दे रहा होता है, वो भी ना डाल रहा होता है, थोड़े से लुक में डाल रहा होता है कि भाई कुछ बनता लुक में फूटा डाला हो. होता है कि कुछ बोले और हट जाए किसी की ना, बहुत ही बच्चा होता है.
चलो यार एंड करते चलो, हैं। गुड डिस्कशन। आपसे बात स्टार्ट हुई अच्छा, थी हमारी कहाँ रैंडम रैंडम यानी कि एक अच्छी ओवरऑल डिस्कशन। बेसिकली पॉइंट वाज, अगर उसको समराइज करें, कमिंग फ्रॉम अजीम रफीक एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, माइकल वॉन और ये सब चीज़ें, हमने कुछ चीज़ों में बात करी। एक तो नंबर वन, जिम्बो नहीं बोलना है। ऑब्वियसली जिम्बो नहीं नहीं बोल बोलना। पाकी बोलते रहो आप, और ये बोलते रहो कि बेटा तुम लोग बहुत आ रहे हो यहाँ पर, देख कुछ करना पड़ेगा, ये सब बोल लो। लेकिन जोक्स साइड, आई थिंक the important thing was कि actions speak louder than words, right? आपके actions not just on the field, you're off the field as well. Michael Vaughan is highly respected because he was the guy who brought the Ashes home for England for like Yeah. after a long time. But I'm sorry, off the field actions supersede कर जाते हैं उसको. Similarly, Dean Jones, you know, his actions with the Pakistan national, like cricket Pakistan, and then also cricket worldwide, spoke larger than his one slip of tongue, bad judgment on his part. Yeah. Again, action spoke larger than the, you know, sort of Right. लफाजी नहीं करी, it showed it with his action. और फिर obviously we talked about, you know, the legends and the जो हमने class define करी कि भाई एक legend होता है जो कि एक अपने personality में भी legend होता है, और एक legend होता है सिर्फ on paper, जिसमें मोहम्मद यूसुफ legend on paper, personality petty, छोटा Yeah. बंदा, लाइक Yeah. यार क्या बात कर रहे हो आप, मिसबा को सुना रहे हो, ये करो, आप उसी के अंडर काम करो, लाइक अब देखो ना कि दुनिया में आपको सामने दिख रहा, at one point like Misbah hired him, Misbah hired Yunus Khan, Misbah Yeah. hired Mohammad Yusuf, thinking कि भाई तुम लोग की मेरे से लगती है whatever, लेकिन तुम लोगों की सर्विसेज, again a big man thinks like that, जिसको Yeah. अपने अपने अब कोई एहसास कमतरी नहीं होती कि यार मैं ये आ गया तो ये स्पॉटलाइट ना ले लो, कहता हाँ ले लो, तो पाकिस्तान जीत जाएगी ना, ज़्यादा ये होगा, जीत जाए, कोई मसला नहीं है। इस तरह के लोग होते हैं जो बिगर देन देमसेल्व्स होते हैं, जो आपको लगता है कि यार यू 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 ग्रेविटेट टुवर्ड्स देम, टू यू वांट टू रिस्पेक्ट देम regardless of their like international careers and Then, stats, which then Qadri Saab won't agree. कादरी साहब कादरी होंगे, साहब, कादरी अच्छा साहब कादरी, वो तुम लोग का जो जिनकी हड्डी रहती थी, अबे यार एक तो मैं एक एपिसोड इस पे भी करना है। मेरा एक हॉट टेक है पाकिस्तानी फैंस, क्रिकेट फैंस को लेके, मुझे लगता है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इज प्रोबेबली द नल्लेस्ट फैन इन द वर्ल्ड, ये राइट? लाइक कौन सा मेरा ये स्पोर्ट take है। फैंडम इज रैशनल, बट आई थिंक इवन नहीं ऑन नहीं, दैट स्लाइडिंग स्केल अबे पाकिस्तान भाई इज मैं लाइक आपको एट बताऊं, द वेरी बॉटम ऑफ 90% दैट। पाकिस्तान का जो फैन है ना इस वक्त, जो ओपिनियन रखता है, वो सिर्फ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप देखता है पाकिस्तान को, वो कोई फॉलो नहीं करता, उसको इंट्रिकेसीज नहीं No, पता, उसको गेम्स agreed. के बारे में नहीं पता। Agreed. तो मैं ये समझता हूँ कि जो जो सीरीज टू सीरीज जो ग्रोथ फॉलो कर रहे हैं, वो समझ कह रहे हैं अग्रेसिव क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, ओ भाई अग्रेसिव क्रिकेट अबे तो नल्ले फिर बचपन वही के ना, लोग ये ज्यादा। दलेरी वाली बात हो गई, बात ही एग्रेसिव क्रिकेट जो है। वो मिसबा ने बोला था ना शो में, वो जो क्या यार आपको वो बोलते हैं कि आप एग्रेसिव नहीं करते, अग्रेसिव क्या कि मैं रॉकेट लॉन्चर से चढ़ा दूं उस वक्त उस वक्त मुझे लगा था कि हट गई, एग्रेसिव क्या मतलब कि मैं रॉकेट लॉन्चर मारना शुरू कर दूं मतलब कि टैकल करें लोगों को, क्या करें, चमाट क्या मारेगा करे, वो कह वही रहा है कौन। भैंचो जब 10 पे 3 पे मैं आ रहा हूँ तो मैं क्या पागल हूँ, कुत्ते की तरह मारना शुरू कर दूं अग्रेसिव क्रिकेट की वजह से? ओ भाई पोजीशन देखो, सिचुएशन देखो, कोई नहीं चल रहा, चल भी मैं ही रहा हूँ, और फिर मुझसे और, कोई पूछे और फिर और फिर दी इशू इज, अगर फिर अफरीदी हरकत करे तो यार ये तो पागल आदमी है, खरोच आदमी पागल है, नल्ला है, हाँ, हाँ सोचता नहीं, हाँ खेलना लाइक नहीं कोई आता वो नहीं नहीं है, इससे। कोई वो मतलब नहीं है, कोई लेकिन किसी आप फिर भी अफरीदी इज आवर हीरो। yeah. फिर भी अफरीदी कंपैरेटिव देखा जाए तो अफरीदी हीरो बन गया है, और मिसबा इज लाइक मिसबा अनसंग हीरो। although on his CV, where's the bling? Anyways, but that's neither here nor there. We'll discuss हाँ, Yeah. पाकिस्तान फैन के बारे में बात the करनी है, मुझे बात करना है कि ये पूरा एक fan थ्योरी मुझे favorites and मैंने actual समझ में legends. आई। I think there's a gap there as well. But anyway, मैसिव है, लाइक क्रिकेट नॉलेज नहीं है, क्रिकेट अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं लगता इतने पाकिस्तान फैंस के अंदर है। बट एनीवे, गुड चैटिंग विद यू गाइस एज ऑलवेज। नवेद भाई कुछ थोड़ा सा, आप भी कुछ 2-4 एपिसोड निकाल लें, अगर वो थोड़ा सा करते हैं, वो टाइम मैंने मिले। आईपीएल वाले पे भी करते हैं। करते हैं कुछ। आई रियली वांट टू अबे डिस्कस हाँ दैट। आईपीएल पे बात करनी है, हाँ आईपीएल पे बात करें, खैर वो वर्ल्ड कप के बाद जरा देखेंगे कि अभी तो फंसा हुआ है, अल्लाह करे इंडिया आईपीएल आउट हो पे जाए, क्या, लेकिन आईपीएल पे क्या स्पेशली क्या। अबे इसको कुछ पता नहीं क्या क्या करने वाला लगता है उसमें, कौन लास्ट जीतने लास्ट में वाला है न्यूजीलैंड अफगानिस्तान में? अल्लाह करे न्यूजीलैंड जीते, वैसे न्यूजीलैंड ही जीतेगा, टेक्निकली न्यूजीलैंड शुड, हाँ न्यूजीलैंड इज द इंडिया अल्टीमेट शुड गो, प्रोफेशनल टीम, they'll get the job done. हाँ होपफुली दे Until गेट द it's जॉब डन time एंड to win देन, the trophy. Until it's time to win the trophy, they'll get the job done. Like हाँ clockwork. या वैसे मगर अच्छा है, अगर अगर वो जीत जाए और वो फाइनल में पहुंच गया और पाकिस्तान फाइनल पहुंच गया, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू विन। against मगर India, नोइंग न्यूजीलैंड नहीं यूजुअली न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड yeah, न्यूजीलैंड I think यूजुअली सेमीफाइनल में निकट लेता है, तो
हाँ, लेकिन उधर से कौन आएगा? लेकिन हाँ, इंग्लैंड आएगी उधर से तो इंग्लैंड का भी मतलब डिसएडवांटेज ये है कि इनका बॉटम और मिडिल ऑर्डर तो अभी तक एक्सपोज ही नहीं हुआ, वो बटलर ही आगे ठोक के चला, सो वी डोंट इवन न्यूजीलैंड ऐसी टीम है, केन विलियमसन स्पेशली ऐसा बंदा है कि जो है ना एक्सपेंसिवनेस पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता। वो कहता है भाई आप जैसे यार 234 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंडिया को डिफेंड करना, 234 का टारगेट, who's done that? Like who can imagine that an was Indian insane, like इसमें tactical genius इसको बोले ना कि slamped them, क्या कहते हैं उसको यार, कौन था वो फाबियो कपेलो वाली टाइप की कुछ सिचुएशन थी जिसमें होता ना कि जिसमें वो ऑपोजिशन को बिल्कुल चोक कर देता है कि भाई कुछ चांस ही नहीं मिल रहा भाई, कोई नहीं कर सकता आप स्ट्रेटेजाइज, लाइक मोरिनियो इंटर बारसा, that was Mourinho's हाँ इंटर बारसा वाला मैच जिसमें सामने बारसा ऑफ द एजेस थी और इधर से वर्क हॉर्सेस थे, तो केन विलियमसन डिड एग्जैक्टली नाम भूल रहा हूं यार, that guy should have won the मिलिटो Ballon d'Or. मिलिटो भाई कुछ एंड में मिलिटो का चांस था, ऐसा लगा दिया। एनीवेज दैट्स खैर एनीवे क्रिकेटिंग जीनियस है नो डाउट। विलियमसन इज विलियमसन तो विलियमसन ऐसा बंदा है कि वो ना वो स्ट्रेटेजाइज, वो ना चोक करके मारने वाला बंदा है कि वो बिल्कुल ना, अभी पाकिस्तान को फंसा दिया था उसने वो पाकिस्तान मैच में, अनलेस आसिफ वो 2 छक्के नहीं मारता तो गेम फंसा चुका। वो अगर रन आउट भी नहीं होता, अगर हसन अली उसे रन आउट नहीं करता, ही वाज लुकिंग इन अ ग्रेट टच उस मैच में। वो बहुत जबरदस्त खेल रहा था वो बहुत तो लक अच्छी थी हमारी कि वो मिल गया रन आउट फालतू का। हां, आसिफ अली हमारा रैप स्टार, बट एनीवेज अच्छा चलो भाई करते हैं, चलो भाई करते हैं, ओके ओके भाई साइनिंग ऑफ।